Okay, hello, good evening. In today's class, we will be taking up the rest of the topics as we have been talking about. So, first, we had started talking about India and West Asia, which we will very immediately wrap up in the beginning of the class. So, we were talking about Israel and Palestine, and through that, we have already talked about the three important axes of India's approach towards West Asia. In the context of Israel, we understood that about that particular issue there may be a lot of aspects, but much of it has now become history. So from India's perspective, in that region, on that question, on the question of Palestine, if we call it, the position has been that India supports a two-state solution and India supports a negotiated solution, a peaceful negotiated solution for the issues which are there. Now you understand, और अगर अभी तक ये बात नहीं समझ में आई है आपको, तो सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं. That whenever there is an external conflict, India's position is this only. All right, that there should be a negotiated solution, there should be a peaceful solution, and in this case, India supports a two-state solution. Now, what are the two states? One is the state of Israel. So, with the state of Israel, what we can say, as we saw the question that UPSC had asked, right, about the relations, how it has acquired depth and diversity which cannot rolled back. It is the case with any relationship, right? So then I told you that look at the statement, it's an opinion about the relation. When we look at the depth of this relationship, it derives from the fact that India has been one of the few places where the Jews have been welcomed, have not been persecuted. So that we can say there is cultural and civilizational ties. B, we can say that when Israel became a state in 1948, after that a lot of Indian Jews or Jews who were living in India migrated to Israel. So 85,000 Jews of Indian origin are there in Israel. And third, we also see people to people ties are also there, because in science and technology and other areas, Indian students are now going to study in Israel. And then we also understand that building on this, especially since 1992, when India upgraded its relations with Israel, the focus has been on areas like defense and security. So it means that while India remains a large defense importer, Israel has emerged as its important supplier. Certainly India is the number one market for Israel. All right, number one defense export market for Israel is India. All right, and in Israel also has figured among the top 3, top 4 suppliers of India. All right, one of the most famous imports from Israel has been the AWACS. All right, airborne early warning system, the AWACS radar system that we bought from Israel. That is one of the most famous deals that we have had. But that is not the only thing. When it comes to smart fencing or surveillance equipments or spare parts, or devices like unmanned aerial vehicles, we have imported from Israel. So it is an important supplier to us, and we are an important market for Israel. Similarly, in 2021, DRDO signed an agreement with its Israeli counterpart for exploring the possibility of developing together defense platforms and defense technology. So in 2021, DRDO has such an agreement with Israel's own defense industries. So that is also the idea. Apart from that, we have developed dialogues in various areas. So India and Israel have a counter-terrorism dialogue, or a dialogue on homeland security, all right, or a dialogue on cyber security. So this is also another way in which we can say in the area of defense and security, dialogues in various areas are advancing the cooperation. Main areas would be counter-terrorism, homeland security, and cyber security, these kinds of areas. You will also see, for example, 2015 onwards, the IPS probationers, as part of their exposure tour, were sent to Israel. So that is also
of security cooperation that you will see. And similarly, if you see in 2021, the Chief of the Air Force had visited Israel. So that basically is telling you again, when you are talking about defense security cooperation, these are the kinds of examples that you will use. In some relations, we have already seen defense and security cooperation in its broadest spectrum. Alright? So then after this, IR कोई रहस्य नहीं रह जाता है, because we are talking about the same things, and that is something that you should pick up within the first 10, 12 lectures. When you do that, for as a teacher, it becomes easier for me to move forward. Right? When you keep on treating international relations as a mystery, कि इसमें कुछ और भी जोड़ने की जरूरत है, so what happens is then you start putting impediments in the class. हमेशा हम देखो यही पैटर्न में बात करते रहें, right? And then what we also see is that while defense clearly is a strong pillar of our cooperation, other areas of cooperation have also diversified the relation. So for example, after 2017, we consistently use the term de-hyphenation, that India-Israel relations are now operated under the framework of de-hyphenation, which simply means that our relations, any relation, is independent of any other relation. It stands on its own merit, and it is not equated with or linked with any other relation. So it's an independent approach. We would say, for the purpose of simplicity, that we have stated that now we have about this relation. All right, because traditionally relations with Israel were always linked with the Palestinian issue or relations with the Arab countries. So since then, what you will see is that a depth of the relationship further is demarcated by prime ministerial visit in 2017, which was the first prime ministerial visit from India to Israel. Similarly, you will see such visits have become common. So Israeli Prime Minister also in 2018 came to India. And on that occasion, what you will see is that there were various agreements which were signed, which basically is the meaning of diversity, diverse areas of cooperation. So the second area of cooperation that you will see prominently emerged as a pillar of this relationship was cooperation in agriculture and water. All right. So India and Israel together have been implementing their agriculture action plan. All right. Or establishment of, as I had said, center of excellence focusing on areas like arid region agriculture, or promoting Israeli technology, for example, drip irrigation. All right, or learning from Israeli technology in terms of horticulture or closed canopy management, as you will see new technologies of agriculture. So these have been prominent areas of cooperation, and virtually, since people mostly are interested in defense and security, they don't talk about it. So there is also a significant area of cooperation. 2016, again, we had renewed the agreement with Israel, and water resource cooperation, or cooperation in the areas of water use efficiency or cleaning of rivers, right? So these kinds of issues are also very important part of India-Israel relations. Now when it comes to economic relations, the trade has expanded 200 million in 1992 to now around 5 billion US dollars. But we cannot say that Israel is our most important or among the most important trading partners. So from strategic perspective, this also shows the depth of the relation and its diversity, that India has chosen Israel to negotiate a free trade agreement with it. We are negotiating a free trade agreement with it. Traditionally, trade has focused around diamonds, sectors like diamonds. All right. So of course, in this scenario, we simply learn that trade is one area where maybe we can make further progress, where there is scope for improvement. And when we also understand that we also have a solution, signing a free trade agreement, which we are already negotiating with Israel. And then when we move forward, what we see is that borrowing from the agreements that we have signed, civil aviation cooperation, meaning direct flight between India and Israel, cooperation in the area of film production, cultural cooperation, cooperation covering the areas of industry and innovation.
So for example, launch of India Israel Innovation Fund, all right, which was announced when Prime Minister visited Israel and launched in 2018 to incubate technology startups. So India Israel Innovation Fund. So that's a new cooperation. But apart from that, you have agreements for expanding cooperation in the area of space. You have agreements for expanding cooperation in the area of energy. So that is something that we clearly understand tells us about the scope of these relations. And this is basically what the current status of the relationship is. Now, traditionally, this relationship has been affected by the politics in West Asia. And one of the important fault lines in West Asia's politics has been Arab-Israel conflict, or Israel's conflict with any other states like Iran. So, India's position is not siding with one or siding with two, but traditionally India's position was supportive of the Palestinian statehood. And if you look at effectively जो कहानी हमने सुनी, Israel's position was antagonistic to it. So by default, traditionally India sided with the Palestinian issue, supported Palestinian statehood, Palestinian cause, and thereby some questions would be whether this policy remains or not. So understand, without any reason, you should not sell India to anyone. You may have your own favorite relations, but ultimately it is about India's foreign policy. So of course at the formal level we will say that our fundamentals have not changed. All right. The only thing is that now we treat relations independently, right? So thereby, on specific political issues or in the specific political context of the region, there may still remain differences, all right, because no two foreign policies can be identical. So there would be some preferences of Israel on which we may not have the same opinion. So as tradition has been and as this region is, there may still be political differences on certain issues. So from this positively we can also infer that as the situation in West Asia improves, meaning developments like Abraham Accords, all right, or normalization of relations between Israel and other neighbors, it would be helpful for India, because then we are not facing difficult political choices. But in any case, the answer to changing difficult political choices is, we say that dehyphenation. No two relations should be seen together, right? So thereby you will see in 17-18, US had taken a decision of recognizing Jerusalem as the capital of Israel, which was condemned by the international community. There was a vote at the UN. India had voted in favor of that resolution. So again, that would reflect that there are these choices that India would make. It is not anti or for necessarily anyone. आओ पढ़ा लो. Voted against what? आप सवाल पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. हाँ, तो थोड़ा पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी. मैं उससे पहले भी बहुत सारी बातें कह रहा था. हाँ, तो आपका सवाल क्या है? क्योंकि सवाल फिर भी नहीं आया. काम की बात कर लेते हैं. सवाल क्या है? अलग अलग शब्दों में आपने बहुत सारी बातें की, एक लाइन में अंग्रेजी में सवाल पूछिए. ऑल राइट, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो बेनिफिट. पूछिए. आई हैव सेड पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये बात अभी तक एस्टैब्लिश हो गई है कि मैं बोलूं कुछ भी, आप सुनेंगे अपने मन का. सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई हैव सेड से कोई चीज शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ये सलाह भी है ना? सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस क्लास. पैसे वसूल हुए होंगे. बताइए सवाल क्या है एक लाइन में. आई हैव सेड नहीं, सवाल क्या है? यस, सवाल क्या है? आई हैव सेड मुझे कोट मत करो, क्योंकि गलत कोट करोगे. यस, हाँ. वोटेड अगेंस्ट व्हाट? आगे पूरी लाइन करो. इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट जेरूसलम एज कैपिटल ऑफ इजराइल. कहां पढ़ा है आपने? अब दूसरी चीज,
लेके आइए, उसमें ऐसा अगर लिखा होगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, अगर वो कोई स्टैंडर्ड सोर्स है। पहले तो कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स ऐसे वर्डेड नहीं होगा, आपने अपने दिमाग से पढ़ लिया। हाँ, लो, जब क्लास को आप रोकते हैं अपना प्रिविलेज मान के सवाल पूछने का, तो जिम्मेदारी भी होनी चाहिए सवाल के पीछे। ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो लेट मी नाउ से व्हाट आई सेड। आई वाज सेइंग दैट no two foreign policies can be identical. Traditionally, India's position has been supportive of the Palestinian statehood, which is antagonistic to Israel's position that it had taken previously. So even in 2017, when the US presidency under Trump took the decision of recognizing Jerusalem as Israel's capital, and mark my words, इधर देखो, ये भी एक कम्युनिकेशन का सवाल पूछा, तो कई लोग केवल सवाल पूछने के लिए पूछते हैं, पूछने के बाद उठ के चले जाते हैं या इधर उधर देखते हैं, तो ये सिंसियरिटी नहीं होती। सवाल पूछा, ध्यान दो, फिर सुनना मिस हो जाएगा, फिर क्लास रोकोगे, है ना। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे पास जीवन में बहुत समय है, आपका ही होगा नुकसान, ऐसे बने रहिए। तो आई सेड देन दैट विच वॉज क्रिटिसाइज्ड, कंडेम्ड इंटरनेशनली, UN also held a vote on this and India voted in favor of such a resolution. ये कहने का बेहतर तरीका है ना। जो IR समझने का तरीका आपने सीख लिया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए आपने मेरा समय कुर्बान किया, क्योंकि लाइफ में और भी चीजें मैनेज करनी होती है। मुझे भी जीवन भर क्लास पढ़ाने का शौक नहीं कि मैं हर रोज क्लास पढ़ाता रहूं। तो 28 या 29 लेक्चर तक पहुंचता है, तो इसलिए होता है कि मैं कई बार ऐसे लोगों को एड्रेस करने लगता हूं मुझे जिनको लगता है मदद की जरूरत है, और वो आप हैं, अगर आप पहचान पाए हो तो। जिम्मेदारी आप लेंगे नहीं, तो मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं ये बात। एंड इट इज एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स टाइम। रिस्पेक्ट अदर्स टाइम, रिस्पेक्ट माई टाइम, रिस्पेक्ट योर टाइम ऑल्सो। इसलिए मैंने कहा था जब क्लास के अंत में पिछली बार जाते हुए, मुझे जरूरत नहीं है, मैंने क्या कहा था आपको याद है? पिछली क्लास के अंत में क्या कहा था? जो भी डाउट हो आपके पास, आप उसको लिख के लाएं, because I am tired of your verbal doubts, because most of the times your verbal doubts are not framed, they take up a lot of time और आपका फायदा नहीं होता। लिखने जाओगे, एफर्ट लगाओगे, कुछ डाउट तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। when you are writing, some doubts are cleared there itself because you are making an effort। उसके बाद कुछ बचा, लाए हैं आप लोग, किसी ने लिखने की कोशिश की है, उसको सबमिट कीजिए, है ना, उसको सबमिट कर दीजिए मेरे पास, तो उससे मुझे समझ में आएगा। तो ये काम कीजिए। चलिए, सो बहरहाल मैंने इतना कहा कि when there was condemnation of this move by the US, there was a resolution in the UN and India voted in favor of that resolution. That resolution may be perceived by against Israel or for Israel, but that foreign policy ऐसे नहीं चलती है, ठीक है। That represents India's position, which is what? That Jerusalem's final status should be determined by negotiation. Right? So any side claiming Jerusalem to be their capital or any such recognition is against international position, against the international position that has been consistently reflected in UN resolutions, resolutions for which India has been consistently voting. So thereby, again I will say, अपने पढ़ाई के बेसिक स्किल पे ध्यान देना चाहिए। बेसिक्स, यूपीएससी हमेशा बेसिक्स तक ले जाती है। चलिए आगे बढ़ते, अब कोई डाउट नहीं रहा, चलो। So that basically means that there may remain some political differences. Again, I had been very elaborately saying that it may be because of the context of West Asia, because of there are various fault lines or traditional positions that India may have taken, because those positions are based on, our voting is always explained on the basis of principles. इसीलिए मैंने आपको पूरे से, जैसे इस साल में जो भी हो रहा है उसका हम बेसिक सीखने के लिए ले सकते हैं। सो रशिया यूक्रेन क्राइसिस में आप कुछ भी सीखना चाहें, टैंक्स, पैंथर टैंक्स, ये टैंक्स, वो टैंक्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, जहां भी मौका आया। तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में भी वही बात की। 2593 क्या है? 2593 यूएन रेजोल्यूशन, इंडस वाटर ट्रीटी के केस में भी, जो लंबे समय तक आपके साथ रहे, है ना। आपने भी देखा होगा शायद कि हमने ट्रीटी को चेंज की डिमांड की। मैंने क्लास में उसको डिबेट की तरह कराता हूं कि आप हाँ बोलो ना बोलो, पढ़ के आओ, इसलिए कि आप सीख जाओ, ठीक है। बचकारी हरकत कर रही है वो आपके ऊपर है, समय बर्बाद करते हैं आप। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि व्हाट अबाउट द पैलेस्टीनियन इशू? वी हैव ऑलरेडी नोन द स्टोरी, सो अगेन ऑन दैट सिंपली रिमेंबर 3 things. 1, traditionally India has been supportive of the Palestinian cause. What is the Palestinian cause? Their demand for statehood. This is something that India has
supported. That has been India's traditional position. Where did this come from? I had told you an elaborate story in the last class about this region. Interest जगाने के लिए था. अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लें. So then you have the idea that the way our national movement developed, self-determination or anti-colonialism, anti-imperialism, these were important issues therein. So from those principles and also particular political conditions, for example, Mahatma Gandhi using as one of the symbolic measures of mobilization the issue of Khilafat. So India had a view on this region, right? And thereby, when the Palestinians are saying, as Arabs, we are the majority in this land, we have lived here for hundreds of years, without disrespecting any other sentiment, that position became that India supports Palestine for Palestinians, all right, meaning Palestine's statehood. When India became independent, the spirit of decolonization, the spirit against anti-imperialism, third world solidarity, this is what we were like at that point in time. So even in the independent period, post-independence period, as a matter of either you call it ideology or idealism or as a matter of principle, that position remained strong. But what the change was that 1948 Israel emerged as an independent state. So was India opposed to Israel as a state? Technically speaking, no, because Israel came out of a UN resolution. So India recognized Israel. There were lots of Jews in India. Israel opened a consulate in Bombay. But those relations were never normalized, in the sense upgraded, because at that point in time India and Israel were not very important for each other. ऐसा भी हो सकता है, जैसा हमने US के बारे में कहा. B, traditionally Israel and Arab states fought a war in 1948, so this antagonism was set, all right, and Israel was seen to be with the Western powers, right? So that antagonism is also set. So there may have been a lot of reasons why India's position was what it was, right? But these are the major positions that I am talking about. Some books would also say that there is a domestic concern. So the sensitivity of the Muslim community towards the Palestinian issue, right? As I said, Gandhiji chose Khilafat as a symbolic measure of ensuring participation, because he had to make a mass movement. इतना आप समझें, गांधी जी को mass movement बनाना था, तो symbolism होता है कुछ issues का. So Palestinian issue was important for Arab states, important for the Palestinians, but some books would say that also important for the Muslim community in India, right? There can be many reasons. आप क्या चुनते हैं वो आपके ऊपर है, but UPSC में you tell all the reasons. That's something that you should always learn, right? Because you are, whatever you think, you are not going to be spokespersons of the government of the day. You are going to be the spokespersons or working for the government of India, which is established by a procedure which flows from the constitution, and constitution's first line says, we the people of India. All right, so that's why you should focus on fundamentals and processes. डर भी आपका कई बार होता है कि ये कह सकता हूं क्या, या ये कह सकती हूं क्या. तो ये आपने मान लिया अपने दिमाग में कि आपको एक कोई पोजीशन लेके जानी है, कहीं पे भी कोई पोजीशन लेके जानी है. आप फिर मेरिट बेस्ड बात कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका काम हो गया लोगों को खुश करना. तो देन लेट्स कम टू द प्रेजेंट टाइम. सो व्हाट इज इट दैट इंडिया डिड? So first, India has traditionally supported the cause of Palestinian statehood. Two, for this purpose, India has voted in the United Nations in support of these causes. Wherever these causes were involved, we can say, we can read India's vote to be supportive of the Palestinians, right? And what are these votes? 1967 war criticism, of course, of Israel. 1948, right? So, of course, a resolution may have many things, but India's vote is not country specific. ये fundamental है. हम कभी नहीं कहते कि हमारा vote country specific, right? And we would not like to vote country specific. जब भी करेंगे exception होगा. But politically we can read that अगर आप zero sum देखो किसी issue को, so one's gain is another's loss. All right? So that's where second thing we learn, that India supported these causes or supported such resolutions at the United Nations also. All right, whenever such issue was discussed. India, for example, supported the inclusion of PLO, identification of PLO as the sole and legitimate representative of
Palestinian people. PLO के बारे में बात कर चुका हूं मैं पहले ही, right? So this is something that India did. Now India also supported when the Palestinian Liberation Organization declared a state in 1988 after Intifada. India was one of the first non-Arab states to recognize the Palestinian state. That's why you will see Palestinian embassy in New Delhi. All right. So that has been there. And then in the 1990s, when India upgraded its relations with Israel, it's a reflection of changing circumstances globally and the peace process which is going on. So then India's position has always been supportive of a two-state solution because it first was suggested by a UN resolution. This two-state solution should come about through peaceful negotiations. Such negotiations were ongoing in the 1990s between the Palestinians and the Israelis, as we call it, Oslo peace process. So now this is something that is added to India's position. All right, and simultaneously India's relations with Israel are developing. Now after, in the era of dehyphenation, you don't think that this position would change. So India even now on the issue supports the Palestinian cause, meaning under the right context supports the Palestinian statehood, and the right context is peaceful negotiation. All right, it should lead to peace, it should lead to two-state solution, right? And then in the 1990s, we have a formation of Palestinian Authority. So India has been supportive of development of Palestinian people and has provided support to such humanitarian agencies which operate for the welfare of Palestinian people. For example, UNRWA, UNRWA, right? United Nations Refugee Works Agency or Relief Works Agency, right? For the Palestinian refugees, UNRWA. So, for example, 2018, when US announced that it would cut down its contribution to UNRWA, India increased its contribution to UNRWA to $5 million US. All right. Earlier, India used to contribute around 1.5 or 1 million US dollars. Now, India has increased its contribution to UNRWA to 5 million US dollars. Similarly, India has over the years provided more than 50 million US dollars of budgetary support to the Palestinian Authority. What is Palestinian Authority? You can say it is the proto-government of the Palestinian people, which right now is based in West Bank. All right, Ramallah is the headquarter of the Palestinian Authority. So India has provided budgetary support to these the Palestinian Authority in different tranches, 10 million, 20 million. All right. So that is there. And then you have, for example, 2018 completion of the dehyphenation approach, when Prime Minister made a standalone visit to the Palestinian territories, West Bank. All right. So if you have to understand dehyphenation, the simple example is 2017, the Prime Minister visited Israel only. 2018, he visited West Bank only. All right. Whereas 2015, President Pranab Mukherjee had visited both Israel and Palestinian territories in the same trip. All right. So both are important, but we don't equate these two relations, right? So this is basically A, facilitated by how times have changed. Normalization is happening in West Asia itself in relations. And B, it makes it less complex to operate our relations, less complex. So it's a pragmatic approach, all right? But the support to Palestinians continue, how? Budgetary support. And when support to UNRWA, and when the Prime Minister visited, agreements were signed for cooperation in the area of development again, right? So India traditionally has supported establishment of a field hospital. India in its new commitment also has supported healthcare infrastructure in Palestine, women's education and training, skilling. These projects are being supported by India, women's education, skilling. All right. So again, these are the ways in which now India supports the Palestinian issue or the Palestinian people. Here and there on different debates there may be different positions. Some votes can be seen as pro-Palestinian, some votes can be seen as pro-Israeli. पर किसी भी vote का मुद्दा केवल pro और anti कोई नहीं हो सकता. There are issues and principles within that.
So this is what our position on the Palestinians is. With this, we have completed our discussion of relations in West Asia. So now let's come to taking this region together into a policy framework. So various newspapers or writings, depending on who is writing and in what context they are writing, talk about the existence or development of a look west policy, or stress on the need for look west policy, or are talking about the evolution of the look west policy. All right, but the common thing is that all of them are using terms like look west. Some would say look west hai, some would say look west nahi hai, hona chahiye, some would say look west is evolving. So all this simply reflects a opinion or position on India's approach towards West Asia. It highlights at the same time the significance of the region and significant aspects of cooperation. It is either talking about something recent, for example, when Prime Minister would be visiting any of these countries, you will find a mention to look west. All right. So all these things are very common part of in discussions on West Asia. Right. Sometimes you will see the use of the term think and act west. All right, or link west. So when we say link west, think west, act west, whatever, it is basically first a reference to some sort of policy framework towards West Asia, right? So let's simply first answer small questions. Why look west? All right. So one is the idea that maybe we have, for example, for regions like Central Asia, Connect Central Asia policy. It's our external, it's our extended neighborhood. A much famous policy is Look East, which became Act East in the case of another extended neighborhood, which is Southeast Asia. All right. So thereby, it's logical to think of a need of a policy framework covering another extended neighborhood, which is West Asia. So for example, Prime Minister Manmohan Singh had talked about the need for developing such an approach while pointing out the existence of a Look East approach. All right. He said, since India has a Look East policy, it's logical that we also have a Look West policy. This is also a period in 2004 when India had launched a free trade agreement negotiation with GCC. All right. 2004, India had launched a free trade agreement negotiation with GCC. So again, the significance of this region. Some people trace the launch of Look West to those developments. All right. For example, launch of free trade agreement negotiations with GCC. Right. Now, at the heart of this argument is the idea that our engagement with West Asia is in any case expanding. Right. In the areas we already have cultural and civilizational ties. We have vibrant people-to-people ties. Our strategic ties with many of these countries are now well defined. All right. Our economic ties, our energy ties are well established. So that's basically the content of any Look West policy. Why Look West policy? Because the region is important. Because our interactions and engagements are expanding. And there is also a matter of comfort and perception. So because of what we call cultural civilizational ties and also people-to-people ties, there is a continuous linkage between India and this region. So that comfort of familiarity is there. For example, Indians being the largest expatriate community in many of the Gulf countries. And second is, when India is saying look west, West Asian countries, Gulf countries, and some of the Gulf countries may also be looking east. Meaning every country would like to diversify its foreign relations. है ना? केवल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि और लोगों की नहीं हो सकती. So it's commonsensical that if there is look west, there need to be look east. उधर से भी आपको देखना चाहिए किसी को, वो भी look east कर रहे हैं. So in West Asia also there is a certain evolution of a unique look east approach. Why? Because countries like India and China are their major energy consumers. Japan also. All of them are to the east. So West Asia is also looking at Asia, rest of Asia, towards its east. And in that you would also see that
West Asia is a region which has been influenced by external interventions. So for example, US has been a dominant power. The problem with a dominant power is you would like to have friendship with them, but you would always feel under their shadow. So in that context also, West Asian countries either have launched, for example, we saw Vision 2030 of Saudi Arabia, or UAE diversifying its economy. All right. And in some times you will see, for example, during Obama administration, Gulf countries and US did not have a common view on how to deal with Iranian nuclear program. So because of various reasons, the West Asian countries are also keen to diversify their foreign relations. One reason is the potential of Asia, how India, China, Japan are important consumers. Second is potential of Asia, how India, China, Japan are large economies, growing economies. And third is strategic reason, where US has been a dominant power, but West Asian countries may also like to engage with other countries. So again, Asia shows potential. China is a strategically important country, but India also has important strategic credentials. All right. So all these are signal of changing times. While India's approach towards West Asia needs definition, West Asia's approach towards India is also changing. All right. Now you will see that how would a look west be moved forward? What is required? So what is required never comes in vacuum. It always is based on what is already happening. So of course, more government to government interactions. So now you can see whether it is happening or not. हमने सारे relation में क्या बात की? When we say political visit, this is what we are saying, government to government interactions. So of course, more government to government interactions. Government is important to this process. But we say that you should always keep in mind two things: necessary condition, sufficient condition. So government involvement is important, but then what is also important is to diversify the engagement itself. So people to people engagement. All right. So that would be the driver of these ties. We need to focus on this also. And apart from that, industry. So when we say stakeholder approach, जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में पढ़ोगे, प्लानिंग में पढ़ोगे, स्टेक होल्डर्स कौन है? सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इन एनी ऑफ दी जीएस पेपर्स. देख लो, एथिक्स में स्टेक होल्डर पहचानते हो पहले, है ना, फिर उनका इंटरेस्ट पहचानते हो, उसके हिसाब से फिर अपना वैल्यू आइडेंटिफाई करते हो, व्हाट वैल्यूज यू वुड बी सर्विंग. सो यहां पे भी यू अंडरस्टैंड हु आर द स्टेक होल्डर्स. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, but also at the level of people. If relations are good, then we can say that relations are on a stable or even keel. And then if business also becomes a part of it. So we saw one such example, that of India-US relations, where we have all these significant numbers. More than 50 dialogues, 4.5 million people of Indian origin as diaspora in the US, their contribution. And we also saw industry to industry collaboration, even in the matter of defense. That is the प्रायोरिटी. जब भी आपने देखा होगा एयरबस को दिया है ना, 260 जो एयर इंडिया के प्लेन है उनसे खरीदेंगे, 220 एयर इंडिया के प्लेन खरीदेंगे किससे? बोइंग से. बोइंग अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका वाले बताएंगे कि देखो इस इन्वेस्टमेंट से, वहां का कोई नेता बताएगा इन्वेस्टमेंट से इतनी नौकरियां आई. फ्रांस भी इंपॉर्टेंट पार्टनर, उसको भी दे दिया. इंडिया कैपिटल एक्विजिशन कर ही रहा है. तो बेसिकली इसको सिनर्जी कहते हैं. एनी रिलेशनशिप अगर वो आप सभी को ऐड करे, किसी भी रिलेशनशिप में केवल लेने लेने का रिलेशन नहीं हो सकता, ऐड करना चाहिए एक दूसरे को, और कोई भी रिलेशन इस बारे में होता है. सो दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, बिजनेसेस बीइंग पार्ट ऑफ दिस रिलेशन is going to be important. Economic issues, people to people ties, energy issues, of course, are traditional important issues to focus on. But what is also important is to define the strategic agenda of cooperation. And now strategic can mean either advancing defense security cooperation or future long-term cooperation in any number of areas. All right. So renewable energy, technology, maritime security, counter-terrorism, free and open oceans for all. These are some of the areas which, or combating climate change, these are some of the areas where cooperation is futuristic, is important. All right.
So that basically also is something that may open up the possibilities. What else may open up the possibilities? So as I said, changing circumstances, right? 1992 is a period in which there is Madrid peace process, there is Oslo conference, end of Cold War, and you will see India takes a decision of upgrading relations with Israel. So if you are not able to understand that context के बिना कोई superman or superwoman नहीं हो सकता, so your reading of foreign policy would always be wrong, because you will be trying to find reasons at the wrong places कि ऐसा क्यों हुआ, right? और फिर अगर कुछ फेलियर होता है तो उसको भी आप किसी इंडिविजुअल से ही जोड़ेंगे. So that is no kind of learning. All right. So then you understand that when, for example, such important changes are taking place, both sides are changing, both sides need each other. Now, if there are any difficulties which are addressed, this coming together would become further facilitated. So what has changed? So you will see the approach of Arab states towards Israel is changing. All right. So that one of the signs of that is signing of Abraham Accords in 2020. So when something like that happens, analytically we will always understand that these are India's interest, and in some of the areas India may benefit. So one is, in the case of UAE, we said the possibility of trilateral cooperation. All right. But we clearly said that technology or maritime security cooperation in these areas, agriculture, water, environment, these areas, there is a high potential for cooperation. So now we see 2021, the launch of a dialogue called I2U2. All right. India, Israel, USA and UAE. So this started at what level? It started at the level of foreign ministers meeting each other, officials meeting each other. And then when this cooperation, first of all, it is built on the backdrop of the Abraham Accords, which symbolizes changes in the region. It is also in the context of India's own dehyphenation approach. It is also in the context of India's own multi-alignment approach. All right, where India is ready to be friends with any number of countries. तो ये तो आपको टीचर अलग से बताए तभी याद होगा, आप खुद से नहीं सोच पाओगे, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसे लिखते समय कोई आपके हाथ पकड़ के लिखाने नहीं आएगा. Nobody would come and write your essay for you. So please work on your own language, work on your own knowledge. So now if you see that I2U2's outcome has been focusing on cooperation in the area of climate change, clean energy, food security, all right, energy largely, which is renewable energy, and all this cannot go ahead without cooperation in technology. All right. So technology, combating climate change, energy cooperation, especially in the area of clean energy, renewable energy, food security, infrastructure, these are the areas where clearly this cooperation can be beneficial. Secondly, when you look at I2U2, it has the potential to contribute to the stability of West Asia as a region. And thereby, if it moves in the positive direction, it would aid all aspects of India's interest. Right? Once you understand West Asia, I2U2 is not simply a current affairs question. उसके पीछे फंडामेंटल ये है कि वेस्ट एशिया को समझते हो और I2U2 current affairs है. Right? So that's why there has to be a combination. When you are reading current affairs, go back to the basics. When you have read basics, when you see anything in current affairs, it starts making sense. All right. So again, it would aid in India's West Asia approach. It has the potential to contribute to West Asia's stability. All right. And third is economic potential of it. It may lead to vital mobilization of technology and investment. क्योंकि कौन से एरियाज आइडेंटिफाई किए देख लो. सो फॉर एग्जाम्पल यूएई अनाउंसिंग इट वुड बी इन्वेस्टिंग इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया. सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज को. तो फिर आप ये पेपर 1 में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने एक होलिस्टिक समझ डेवलप की तो आपके बात करने का लेवल अलग हो जाता है. ऑलराइट. तो ये तो प्रैक्टिस से होगा ना. So this is one area where you will see direct, clear benefits coming out, right? Food processing sector, UAE's investment in that area, clean energy, right? And then you will also see that
such a regional cooperation may add to the global stability also. Why? Because India ultimately supports multilateralism. I2U2 by nature is multilateral, but it is small in participation. So इस तरह के multilaterals को आजकल हमने कहने लगे हैं minilaterals. So minilaterals represent coalition of like-minded, right? Minilaterals represent a desire to act, an action between like-minded and small groups is seen to be more plausible today when large-scale multilateralism is under threat. All right. So again, it has a lot of possibility. That's why it was called the West Asian Quad. All right. West Asian Quad कहा गया इसको. जैसे Quad Indo-Pacific में है, इधर एक Quad है. So basically contributing to regional stability and then contributing to global stability, and then it's a feature of how multilateralism is evolving through minilaterals and coalition of like-minded. ठीक है. अब ये जो आप समझ गए, तो आप समझ गए कि ये कुछ जो है ऐसा दिखने लगेगा लुक वेस्ट पॉलिसी, अगर चारों तरफ शांति हो, अलग अलग तरह के कोऑपरेशन इन डिफरेंट एरियाज. But then it is not as easy. So there are some challenges in articulating or identifying a clear, coherent look west policy. What are the challenges? It's very simple. If you compare it to look east, you find that West Asia is not as cohesive a region. Even Southeast Asia is not very cohesive. But certainly West Asia has much more fault lines. It's not as cohesive a region. So the challenges to any coherent look west comes from the factors of instability, like civil war like situations in many of these countries, but more importantly frictions from time to time between different regional powers. Iran, Arab states, right? Iran, Israel, in the past and also to a certain extent now, Israel, Arab states rivalry, right? Sometimes you will see Qatar, for example, was ostracized by Saudi Arabia and UAE. So that is another kind of rivalry. So for any coherent policy approach to be there, you also need a counterpart which is recipient of that coherent approach. So in that case, our look east was facilitated by ASEAN, all right, Southeast Asian countries coming together under ASEAN. So it's not as coherent a region. It has multiple fault lines. It has civil wars where different actors are involved geopolitically, but also rivalry between states, right? And then what you also see is that non-state actors adding to focus, and sometimes I will say more than needed focus on security issues. All right, as I said when I started West Asia, that if you start defining West Asia, most of you would define it in singular terms, right? So basically rise of non-state actors, which adds to the instability of this region. That would also be a challenge. And if the region, as I said, move towards a greater consolidation or integration, or develops its own collective security approach, all right, meaning they themselves develop a common approach how to stabilize this region, of course India's look west policy would benefit from that, right? So that is something that we should keep in mind. This would be the limitation of any such approach, and thereby the constant effort has to be focus on the achievements of the past and the challenges of the future. When you focus on the achievements of the past, you will clearly see important areas of engagement which needs to be carried forward, and when we see challenges of the future, you may find commonality among both sides. That's why you are seeing a lot of such exercises. Nasim al-Bahar to thi uske baad with UAE Zayed Talwar. So this is our discussion on West Asia over, complete, right? So again, now if you have any doubt on West Asia, you can ask a question, but the question should not be one word, two word, or it should not be for me to guess ki sawal kya hai. If you have any coherent questions, please send them forward. We have completed West Asia. If not, let's, in the spirit of what we are supposed to do, let's go forward and look at diaspora as a topic, right? So that's the next topic that we will be covering today. And as I have told you, that these are now topics from the larger perspective of the examination which we have been covering, whether you realize it or not,
right? So towards the end, after relations are over, after bilaterals, we look at regionals, and after regionals, we look at some issues which are largely cannot be reduced to one, which cannot be reduced to any one region, which are global in nature. So diaspora, पहले तो ये सवाल लिख लो, right? And again, if you still need someone to tell you that you should be looking at questions, again that shows a deficiency on your priorities. आपका काम कोई और नहीं करेगा. बचपन में कहानी पढ़ी होगी शायद कि एक किसान और उसके बेटे के बीच में बात हो रही है कि आज खेत की फसल काट देते हैं, खेत में एक चिड़िया का घोंसला है, उसमें अंडे हैं. चिड़िया के बच्चे ये बात सुन के डरते हैं, पर चिड़िया के बच्चे ये बताते हैं कि दोनों ने फैसला किया कि वो चाचा को बोलेंगे या पड़ोसी को बोलेंगे. तो चिड़िया कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है. पर जिस दिन वो डिसाइड करते हैं कि हम खुद ही आके अपनी फसल काटेंगे, चिड़िया कहती है आज निकलने का टाइम है. क्यों? क्योंकि जब आप कोई काम खुद से करोगे तभी होगा. ऑल राइट. सो एंड दिस इज माई टीचिंग स्टाइल. ठीक है. सो कीप असाइड व्हाट यू डिसलाइक, क्योंकि उसका कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं है, एंड टेक व्हाट यू कैन लर्न. राइट. तो आई होप यू विल बी able to, online students can always screenshot, offline students now, क्योंकि मैं क्लास में कई बार आपको ट्राई कर चुका हूं, जस्ट टू ट्राई योर राइटिंग स्पीड. ये कितने वर्ड के क्वेश्चन है, उसको लिखने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज गिविंग यू अ सेंस ऑफ योर स्पीड. ऑल राइट. सो राइट इट वेरी क्विकली. इट इज पब्लिकली अवेलेबल ऑल्सो, है ना. इसी को कहते हैं अपना और दूसरे के समय का रिस्पेक्ट करना. पर खैर, एक बहुत ही सिंपल सलाह देता हूं. कभी भी ये सवाल पूछना किसी भी जगह पे, डोंट स्टार्ट विद यू सेड दैट. क्यों? बिकॉज दैट ब्रेक्स द कम्युनिकेशन, बिकॉज दैट ब्रिंग्स द पॉइंट टू व्हाट, हु सेड व्हाट. ठीक है. तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड लर्न. ये चीज कहां सीखते हैं आप? यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में. दिस इज समथिंग दैट यू शुड आइडियली लर्न इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बाय लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेसर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचर्स. तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में समय बिताने से भी कई बार आप बेसिक एटिकेट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन सीख जाते हैं, खासतौर पे उन टीचर से जिनको आप पसंद नहीं करते होंगे. ऑल राइट. फिर ये आपके काम आता है यूपीएससी में. सो आई मेट अ कैंडिडेट यस्टरडे. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिम दैट टेकिंग प्रेशर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. पर उनकी राय बन चुकी है कि इट इज अ प्रेशर सिचुएशन. इंटरव्यू तक आते हुए भी उनका परफॉर्मेंस उस इंटरव्यू में वैसा था. उनको समझाने की कोशिश करो तो शायद उनको सुनना नहीं था, उनको बोलना था अपनी बात. अब बहुत सारा गुडविल लेके भी अपने मन में मैं क्या कर पाऊंगा जब उनको सुनना नहीं है. मैं कह रहा हूं प्रेशर आप बनाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम्मेदार हैं प्रेशर बनाने के लिए, इसका मतलब आप जिम्मेदार हैं उस प्रेशर से डील करने के लिए. राइट. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉल्ट. So the person that I'm talking about was accustomed to talking in terms of fault, कि लोग गलतियां निकालेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है. So till you are in the examination, try to have a positive aspect because there may be a lot of negative aspects, right? और किसी का फायदा नहीं कर रहे आप किसी और पे एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने आप पे कर रहे हैं. क्यों? यूपीएससी ने कोई इन्विटेशन नहीं छपवाया था कि भाई आ जाओ, तुम इतने टैलेंटेड हो कि तुम नहीं आए तो इस देश का नहीं हो पाएगा.
राइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कोशिश कर ले, ये लिख लिया होगा शायद आपने। चलिए, so we are going to learn about the diaspora, right? How would we learn about the diaspora? By making some very small questions. And how would we make questions when we are studying? By looking at what UPSC has been asking. So first question 2012 is from old pattern, all right, when the examination was conducted in old pattern, all right. 2013 के बाद से सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ और एग्जाम के ये 4 जीएस के पेपर का पैटर्न जिसको कहते हैं वो शुरू हुआ। तो जब भी आपके मुंह से ये निकले ना कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया था, 2-4 सवाल के इधर उधर से लोग कहने लगते हैं पैटर्न चेंज हो गया, थोड़ा ध्यान दें कि हर शब्द का एक वैल्यू होता है, इसलिए वो शब्द बनाया गया है। जितना आप ये सीखते जाएंगे उतना बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, उतना बेहतर कम्युनिकेटर बनते जाएंगे, ऑल राइट, ठीक है। सो इफ लाइफ इज अबाउट मेकिंग प्रोग्रेस, that this is the only progress that you can make. You can be better than what you were yesterday, all right. और better का मतलब होता है skillful. Skillful का मतलब केवल चालाकी नहीं होता, इसका मतलब होता है कि did you add anything which enables you to be a contributing member of the society? Because एक बहुत ही बड़ा myth है जिसके सहारे सारी इंस्पिरेशन की इंडस्ट्री चल रही है, सेल्फ मेड मैन और सेल्फ मेड वुमेन। नोबडी इज सेल्फ मेड, somebody or the other may have helped you along the way, because that is how human society is. This being self-made to a certain extent is helpful in inspiring yourself, but after a point it starts blinding you. You stop forgetting कि एग्जाम में भी कोऑपरेशन हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन सेट ना करे और एग्जाम का हॉल का दरवाजा आके ना खोले और कोई आपको सेंटर तक ना पहुंचाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप भूल जाते हैं जब ये होता है ना कि हम सेल्फ मेड हैं, और इसका इल्यूजन हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, बर्डन हो जाता है, क्योंकि आप इंडिविजुअल अपना टैलेंट प्रूव करने में लगे। पर अगर आप इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, यू कैन befriend everything that comes your way, you will be enriched for life. So looking at these questions, what questions come to mind? First question is about what are the different categories within the diaspora. पहला सवाल तो यही कि what is the diaspora, all right, उसका आंसर आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा, as I always say, right. Second is what are the different categories within the diaspora, what are the numbers, where is the diaspora spread, what is its significance. So that is one set of questions, right, and categorization of diaspora. Second set of question would be how does India engage with the diaspora? As this engagement evolved, can we make a framework for that? And then third, of course, part of it is being aware of programs or policies, then their names through which India engages with the diaspora. ठीक है, ये तीनों सवाल यही पूछ रहे हैं। पहला सवाल, how is the new diaspora different from the old diaspora? Write a short analytical note. Note में क्या लिखोगे? This is the size of the diaspora, these are the different categories within it, these are the major places where they are spread, these are the achievements of the diaspora. This is what you will write. Second is, how is the new diaspora different from the old diaspora? Of course, new diaspora may have either a time-based definition or a place-based definition. तो वही आंसर हो गया. Second, Indian diaspora has an important role to play in Southeast Asian countries' economy and society. So when we are talking about South Asia, we said we have cultural and civilizational ties. Even in the modern times, since the Britishers ruled both sides, there had been movement of people. For example, like INA was raised in Southeast Asia. So thereby, you may also notice when we were talking about West Asia, Southeast Asia, I said in Myanmar around 2 million people of Indian origin. In Malaysia also you have around 8 to 9% of their population of Indian origin. In Singapore that is also the case. अगर आपसे मिस हो गया तो इसमें मेरी गलती नहीं हो सकती, right? So Southeast Asia, you cannot answer these questions without having these numbers. So इसीलिए numbers ये आपको याद रह सकते, कहानी आप अपने से बना सकते. कहानी ये नहीं होती कि वो वहां गए फर्स्ट पर्सन में, कि वो वहां गए उन्होंने ऐसा किया मैंने उनको करते हुए देखा इसलिए मैं आके लिख रहा हूं. Numbers tell the story. I also said that for example in Singapore 3 of their presidents have been of Indian origin. Tamil is a recognized official language there. Do you remember? All this is an answer to this question. All right? And then rest, Indian diaspora has a decisive role to play in politics and economy of America and European countries. Within inverted commas, an opinion about Indian diaspora, but the location is very clearly mentioned.
Europe and America. So remember, when we are talking about America, we said 4.5 million, 25% of startups in Silicon Valley, leadership in the corporate world, participation in the scientific world, 10% of doctor, richest income group in minority group in terms of median income. All right, in United States, Kamala Harris or other such personalities are an important example of it. When we were in Europe, we said migration and mobility is an important issue for India in this region. Why? Because our people are going there, right? So similarly, if you have read, जो होता है ना, एक यूपीएससी की तैयारी करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जो पास में उसको पहले कवर कर लो, इसके बजाय ये सोचने की कि कल को कोई बहुत ही ग्रैंड सी चीज आएगी एंड आई विल प्रिपेयर. So if you have read the printed material only, then you also know 1.6% of UK's population is of Indian origin, contributes 6% to its GDP. There are more than 15 MPs of Indian origin who are currently, और ऋषि सुनक तो हुआ तो उस बार तो अखबारों ने लिख दिया होगा. So you yourself should have also noticed. So this is diaspora. This is the content of diaspora. So again, I will repeat something that I try to teach you throughout the lectures. If you can ask this question, whatever you are reading, where am I going to use it? And learn to answer that question. That's a better way of preparation. All right? Rather than what if. Agar aisa hua to. What if is a, in my opinion, limiting way of preparation. What if? Because it cannot be managed. By definition, human beings would always face a problem of finite mind and infinite to know. इसीलिए हम सुपर कंप्यूटर डेवलप करेंगे, फिर AI डेवलप होगा, फिर AI के सेंटिएंट होने की प्रॉब्लम होगी. इट इज ऑल अबाउट दिस. सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लॉट टू नो. क्या मैनेज कर सकते हो? ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज डूएबल, बिकॉज देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन. जैसा मैंने एक क्लास में कहा था कि इंडियंस के पास आइडिया तो बहुत है, राइट? 140 बिलियन पीपल, आई एम गेसिंग उसका 10 का फैक्टर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उतना आइडिया तो होगा ही इंडिया में. सो यू कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग, लर्न टू मैनेज थिंग्स. ये तरीका होता है चीजों को मैनेज करने का, लर्निंग फ्रॉम दिस. बाकी आपकी योग्यता पे डिपेंड करता है. सो लेट्स स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन. ऑल राइट, व्हाट डज डायस्पोरा मीन? सो डायस्पोरा इटसेल्फ कम्स फ्रॉम अ ग्रीक रूट वर्ड, Greek origin word. Its meaning is dispersal. So this term became associated with dispersal of Jews from what we call Palestine or Israel today, right? Starting with the Romans. But diaspora represents today a generic term referring to people who live outside their country of birth, right? So that's the simple meaning of diaspora. Chinese diaspora, Indian diaspora, Mexican diaspora. This is a reference of people living outside their country of birth. All right, and then that's one way. Another way is there may be some people who may not have been born in India, but their parents may have been born in India. Their grandparents, great grandparents may have been born in India. So they can say that they are of Indian origin. All right, so that's basically another part of the diaspora. And in simple terms, what we can say is that the Indian diaspora comprises of people who themselves or either of their parents or either of their grandparents or either of their great grandparents were a citizen of India at any point in time, but who are living outside of India, right? So that can be one way of defining in simple terms what is Indian diaspora. Those people of India and of Indian origin who are living outside the borders of Republic of India. All right, so that's the diaspora. Now if you look at various sources, they will tell you that Indian diaspora is world's largest diaspora with 31 million size, right? 31 million is the size of Indian diaspora. I would also suggest you which month's current affairs you should read. You should read the current affairs of month of August, because a parliamentary committee's report had come and all these things have been talked about. और printed material में भी ये बातें हैं, ठीक है? So 31 million is the size. Now if you look at it, the spread of Indian diaspora, it is spread throughout the world. Antarctic में भी Indians मिल जाएंगे, Arctic में भी Indians मिल जाएंगे. Anywhere you go in the world, you will find Indians, right? So it's geographically spread out throughout the world.
But then some countries are more important. So there are 11 countries where the size of Indian diaspora is more than 1 million. Alright, 11 such countries where the size of diaspora is more than 1 million. 21 such countries around the world where the size of the diaspora is more than 100,000. Alright, more than 100,000. 21 such countries. Alright, so that's basically becomes another layer that you add to the information. And now from your own effort, you can identify some of the countries where such numbers are large, right? Which countries you can identify very easily where Indians are there in large numbers? USA is there, UAE is there, Saudi Arabia is there, alright? UK is there. So there you have, these are some of the places, right? 3 लेवल पे आपको चीज बताई. पहला डेफिनेशन, दूसरा नंबर्स, ब्रॉड नंबर्स, तीसरा स्पेसिफिक नंबर, सम स्पेसिफिक नंबर्स. ऑलराइट, तो दैट्स बेसिकली, अगेन व्हेन आई एम डूइंग दिस, इट्स आल्सो एन इंडिकेशन कि पढ़ना कैसे चाहिए. मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, पढ़नी चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि यही तो तरीका आपने सीखा इतने दिनों में. नाउ वंस वी अंडरस्टैंड दैट, we also understand that within this diaspora we have either a categorization based on broadly the various streams of diaspora. So in that context we say that there is an old diaspora, there is a new diaspora, and there is a Gulf diaspora. All right, old diaspora, new diaspora and Gulf diaspora. इसके पीछे कोई साइंस नहीं है. Whenever such classification is being talked about, it's for the purpose of ease of classification. All right, इसके पीछे कोई साइंस होना जरूरी नहीं है. But these are the 3 major diasporas which are talked about, meaning in terms of concentration of people, movement of people, its antiquity. And then within these categories also there can be some technical categories. All right, what kind of categories we can call technical categories? Which may have some statutory backing, all right, some legal purpose, some legal standing, right, which may be based on some policies. So one, of course, within this category are those people who we can, and this is a complex area, so I'm generalizing it only because I need to reach to you, all right, and it's not a law class, neither a taxation class. So one is citizens of India who are living outside of India for a particular number of period, all right, which is decided by income tax law. कौन resident है, कौन non-resident है, right? So NRIs, non-resident Indians, for the, as I said, for the purpose of understanding ease and a commitment कि बाद में इसको clearly और technically जानना होगा तो और देखूंगा, है ना? You understand that these are citizens of India लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया. हर बजट अगर कहीं चेंज होना होगा उसमें, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा बजट. बजट बताएगा रेसिडेंट एंटिटी क्या है, नॉन रेसिडेंट एंटिटी क्या है ना. IRS वगैरह काम करोगे तो अपने आप पता चलेगा कि भाई टैक्सेशन में जो है कई तरह की कैटेगरीज होती हैं, रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट. ऑलराइट, दीज आर all for specific purpose कि taxation में कैसे हम करते हैं. So NRI is one class of people. Then you can have categories which have come into existence because they were used in the context of some policy. So these categories which exist today is called OCI. All right, overseas citizen of India. OCI category exists today. ठीक है, overseas citizen of India. But before that there was another category which used to exist as a visa category for Indian diaspora. It was called PIO, persons of Indian origin. All right, now PIO card does not exist. PIO card was merged with OCI card. These two schemes were merged. All right, so OCI exists as a technical category, meaning you can apply for being an OCI. All right, and OCI, for the ease of understanding, is a person who is not a citizen of India. All right, overseas citizen लिखना से मतलब citizen नहीं. OCI
कैटेगरी में वो लोग आते हैं who are not citizens of India, but these are people of Indian origin. So thereby you can also understand that PIO now is a generic term. All right, PIO's use has become generic. It does not exist as a category. जैसे OCI है, NRI है, they are coming from some laws. All right. For example, provision for OCI you will find under the Citizenship Act. All right. Citizenship in India, if you have learned your polity, citizenship in India, A, flows from the Constitution. Constitution has empowered the Parliament or legislature to enact law regulating citizenship, and the result of this is Citizenship Act. And thereby you have what are called Citizenship Amendment Acts. Right? 6 ho chuke. So again, whenever there is some controversy, provocative issue, important issue, rather than going into the controversy, you go into the basics. ये UPSC का तरीका. This is the way of UPSC. So most of the people when CA debate was taking place was एक तो वो लोग जिनको उससे कोई सीधा असर पड़ता हो, तो भाई वो कुछ बोल रहे हो तो मैं उनकी बात सुनूंगा. बाकी इकट्ठा हो जाते हैं सपोर्टर्स की समझ नहीं होती उस इश्यू के बारे में. तो पहला तो CA जो अपोज कर रहा है और जो सपोर्ट कर रहा है उसने पढ़ा ही नहीं, है ना. So that's basically what should not happen when you are preparing for the UPSC. So for example, in that CA, there was one provision which was changed about OCIs, which is now OCI cards can be cancelled. If somebody is found to be guilty of violating any of the laws in India, crime कोई commit किया, तो उस केस में आपका OCI card सरकार revoke कर सकती. This provision was not earlier there. This was inserted by the recent Citizenship Amendment. All right. So NRI, OCI, and when we say PIO, it used to be a category, visa category basically. It does not exist. It has been merged with OCI. So PIO कहीं भी पढ़ें देखें आप, तो उसका एक generic मतलब होता है. क्या मतलब होता है? Any person who was a citizen of India at any point in time and then became a foreign citizen, right? A person who was a citizen himself, herself, themselves, their parents, either of their parents were citizens, either of their grandparents were citizens. So अगर technical category exist करती थी तो इस तरह के लोगों को eligible माना जाता था PIO के लिए, right? Anyone who was an Indian citizen at any point in time but now is not, or either of their parents were Indian citizens and they then became a foreign citizen, or either of their grandparents. But whenever such criteria would be there, there would always be exceptions. So for example, generally people from Pakistan, people from Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, there these kinds of provisions start having exceptions. But this is generally how you can understand. So now you understand that this is basically some technical categories which you should be aware of. और अगर आपका इंटरेस्ट और जागे तो आप एक्सपर्टीज डेवलप करें if there is some requirement in life, right? But you should at least know about this. Now moving forward, what you would also benefit from knowing is this, that India does not offer dual citizenship, right? So apart from well-defined citizens of India, any category, OCI, etc., it's about foreigners who are of Indian origin. ठीक है, तो ये आप समझ लें पहले. दूसरा, the diaspora then cannot refer to people who may have migrated thousands of years ago. कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना. So you cannot say that everyone who is of such and such a religion ये diaspora का part है. All right. So generally when we are studying diaspora for policy purpose, कहीं तो उसको रोकना होगा. So it means it's about recent formation of the diaspora. All right. It is not about the stories of Ramayana. Stories of Ramayana can still link us culturally, right? But you cannot say that somebody went at the time of Ramayana and then that's why they are living in that, because एक तो बहुत ही वेग हो जाएगी ये बात, और दूसरा it would become debatable. All right. So that's why when we are talking about diaspora, we are not going to thousands of years. So that's where the classification. So A, the old diaspora, simply understand, emerged as a result of British policies, and it is dated to the British colonial period. समझ गए आप इस बात को?
अब ये तो कोई बहुत लंबा पीरियड हुआ नहीं, मेनली पिछले 200 साल, ठीक है. सो इट्स ओरिजिन्स आर इन द ब्रिटिश colonial practices like indentured labor. Indentured labor system था एक ब्रिटिश का, contractual labor system. All right. So they took Indians to work wherever their colonies were. And what kind of colonies? ये भी कहानी मैं आपको बता चुका हूं. When we were in Sri Lanka, I said Indian Tamils, Sri Lankan Tamils. Right. So work in, for example, wherever their sugar plantations were. Right. Or coffee or rubber or tea plantations were. So Indians went as laborers. So this is the old diaspora. And where would you find the old diaspora? You will find the spread of the old diaspora in the islands of the Indian Ocean, like Mauritius. You will also find it in Seychelles. You will find it in African countries. Remember, we were talking about Africa, we said something like this, right? You will find it in Southeast Asia, all right, for example, Myanmar or Singapore or Malaysia, not to say other countries are, Indians are not there, but always you have some major examples. Or you will find it even in the Pacific islands like Fiji, all right, Fiji. West Indies Pacific Islands नहीं हो सकता है, ज्योग्राफी भी गलत है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी गलत है, ठीक है. तो Fiji, and Fiji was in news or not? Fiji's finance minister is of Indian origin. How do I know? I don't have any personal relation with him, because I was reading newspaper and on one part I saw his interview, finance minister, because of political instability in Fiji. Fiji was in news early this year, ठीक है. And because the Ministry of External Affairs organized a conference on Hindi in Fiji recently, ठीक है. तो ये करंट अफेयर्स का मतलब होता है, ये होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब. ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं की इसलिए कोचिंग आए हैं, ये एग्जाम की तैयारी नहीं करा सकता, क्योंकि फिर एग्जाम अलग हो गया, सब्जेक्ट अलग हो गया. सब्जेक्ट पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, एग्जाम सीखते जाओ, ऐसे तैयारी हो सकती है. चलो, now that is the spread, ठीक. And if you have read history, you are aware of certain things. If you have studied political science, you are aware of certain things. If you have studied sociology, you are aware of certain things. If you have studied geography, you are aware of certain things. और कुछ नहीं तो some people have a hobby of reading. So non fiction बहुत कुछ सिखा देता है आपको, right? ये कुछ भी छुपा हुआ ज्ञान नहीं है. Now, so if you see from the Indian freedom struggle also, many people would ask you, oh, what is the contribution of Bhikaji Cama? Who is Bhikaji Cama? सुना है कि नहीं नाम आपने? Have you heard the name Bhikaji Cama? Bhikaji Cama was an Indian lady who was active in raising the demand for India's independence in Europe, all right, and she also contributed to the design of one of the initial Indian flags. Or where was the Gadar party formed? Where was the Gadar party active? नॉर्थ अमेरिका कुछ नहीं याद है तो इतना तो याद होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को. तो वेयर इज इट? तो डायस्पोरा का थोड़ा लिंक मिल गया आपको, ऑल राइट. अब इसके अलावा यू ऑल्सो सी हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड, करंट अफेयर्स. हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड? ओके, उससे पहले हमने मनाया प्रवासी भारतीय दिवस. Who was the chief guest of प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन दिस ईयर और कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव दिस ईयर? कौन था? सो वहां भी आपको डायस्पोरा का पॉइंट मिल गया होता, ऑल राइट. सो बेसिकली दिस इज गिविंग यू एन आइडिया. सो कैरिबियन आइलैंड्स है ना, कैरिबियन आइलैंड्स, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन हम कभी कभी कहते हैं, all right. South America refers to continent of South America, Latin America to those countries which speak languages like Spanish mainly, वहां पे Latin America आ जाता है. It's a reference to linguistic region, right? And Caribbean
if you see lesser Antilles, greater Antilles map पे देखना, right, north of South America, south of North America there is a region, Gulf of Mexico, ये सब देखा है, Florida, Cuba, right, then you will find Dominican Republic, Haiti or Haiti on the same island, right, and then within South America there is a country called Guyana. Guyana's president is of Indian origin. There is an island called Suriname. Suriname's president is of Indian origin. ये दोनों लोग आए थे, right? So that is where you will find the old diaspora. And of course, in the United Kingdom also you can find the old diaspora. Why? If you are studying Indian national movement, you study about a leader called Dadabhai Naoroji. And now Dadabhai Naoroji was elected to the British Parliament. All right? So that is something that you get. Now you may have also heard about the incident of Komagata Maru. सुना है आपने? Komagata Maru is the name of the ship which was traveling to Canada, but at that point in time the immigration policies were racist in nature in these countries. So that ship was not allowed to deboard in Canada, and a lot of innocent people lost their lives. Komagata Maru, 1917 to 1919. I don't remember the exact year, but this incident took place called Komagata Maru incident. This is another reminder of how Indians were moving, traveling, were present in different parts of the world. All right. So जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें आपको कुछ ना कुछ नजर आने लगता है. So there are some common elements of knowledge. Please understand this. Separation is only created by either for the purpose of execution, implementation, ease of learning, developing expertise, or it is done by fools. जो कंपेयर करते रहते हैं ना, सोशल साइंस बेहतर है कि साइंस बेहतर है, राइट? इट्स ऑल अबाउट इंटेलेक्ट. ऑल राइट. सो अप्लाई करेंगे तो इंटेलिजेंट होते जाएंगे, ह्यूमिलिटी डेवलप होगी कि आई कैनॉट एवर नो एवरीथिंग. तो यानी मुझसे ज्यादा जानने वाला हमेशा कोई ना कोई होगा, हर किसी से मैं सीख सकता हूं. सो टीचिंग का एक जो पर्क होता है वो ये होता है कि आप अपने स्टूडेंट से कितना सीखते हैं. ऑल राइट. स्टूडेंट से कितना सीखते हैं. तो कई बार स्टूडेंट आपको आके बताता है कि सर मैंने ये यहाँ पे पढ़ा. सो दैट इज नॉट अबाउट ईगो, दैट इज बेसिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड. कि किसी ने मुझसे कहा कि मैंने ये पढ़ा तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि या मैंने पढ़ा हो तो मैं बताऊं या मैं जाके पढ़ूं, है ना. सो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट यू शुड लर्न, मेक एन एफर्ट इवन इफ यू वांट टू गेट हेल्प फ्रॉम समवन. ऐसे ही नहीं चले जाइए मुंह उठा के कहीं पे भी कि हम आए हैं और ये काम है. आप खुद कुछ काम का प्लान बना के जाओ, काम को प्लान लेके जाओ, है ना. क्योंकि भाई देखो ऐसा है कि जब अफसर बनोगे तब भी इतने लोग आ रहे होंगे मिलने के लिए, तो किस आदमी का काम करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा? अ पर्सन हु हैज डन द पेपर वर्क एंड होमवर्क ऑलरेडी, अ पर्सन हुज वर्क हैज टू बी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. अब कोई मान लो पीपल आर कमिंग फ्रॉम रूरल रीजन, अनएजुकेटेड, unaware, of course it's your duty to do their work from the scratch, but it would take time. But if a citizen who has been educated and he does the homework, she does the homework, comes to you, your job becomes easier. Yeah, basically this is something, this is common sense. So now let's move to the next diaspora, new diaspora. All right, what is this new diaspora? So new diaspora is a reference to mainly the immigration out of India after independence, after India became an independent country, right? So post colonial era or post British era, or very simply post independence era migration. And mainly to which areas? So this migration is to mainly English speaking countries, countries in the Europe, all right, English speaking country, Anglosphere कह दो उसको. So migration continued to, so for example, UK, all right, Europe, North America, all right, countries of North America mainly, right. So that is basically what you are seeing, and this immigration is mainly driven by search for opportunities. Opportunities of what? Work, but also understand education. Indians are going abroad in search of better life. So that's why you will see, for example, you already have this tradition. C.V. Raman's family, for example, Sir C.V. Raman, who received the Nobel Peace Prize, taught in various foreign universities, right? So Indians have been moving abroad.
Hargobind Khurana, one of the earliest recipient of Nobel Prize in Sciences, was also from India, right? Born in the erstwhile Punjab province, but emigrated outside. So of course these are there. And then this tradition continues. Indian students going to various universities, or Indians going to work in different parts of the world, mainly the Anglosphere, European countries, North America, right? And now you will see this in this Anglosphere, Australia and New Zealand have become prominent. So you can understand that new diaspora is not about time, it has ended now. Whatever migration is taking place, we can categorize it under new diaspora after independence. Mainly migration for education, migration for better opportunities. Alright. So these have not been caused by push factor. They have been majorly driven by pull factor. Alright. They have moved to advanced economies, for example. And then the third diaspora in this categorization, which we say Gulf diaspora, it also emerged in a particular context. So of course India's familiarity with West Asia is age old. Alright, it is not new. It was also there in the British period, when this region was governed by the Britishers from Bombay. Policies were made for this region by Bombay. Indian rupee was an acceptable currency for a very long time, even in the 1960s in this region, right? And that is all through the linkages which had existed. But in the 1970s, what you would see is there is a new kind of emigration which starts to Gulf countries. What is this emigration? So this new kind of immigration is the workers going to take part in the economic boom of the Gulf countries. Gulf region saw oil boom, meaning increase in earnings, and thereby you will see sudden transformation in the 20-30 years of the region called West Asia, mainly the Gulf countries. Alright, those tall buildings, roads. So opportunities for Indians, right? From divers to Malis to working in factories, oil fields to managers, etc. That's what you saw in the Gulf. So this is something that has been driven by the oil boom and the economic opportunities since the 1970s. Alright, so that's the Gulf diaspora. Now keep in mind that right now we are only classifying it. You have found the mention of these in a different lectures. Alright, so that's why these topics are towards the end, because they are not limited to any particular country. Okay. So now what question should we be answering? Broadly we are now aware of these classifications. We will open up some of the classification. For example, we will look at what is OCI later on. But the next question that you should be asking is, what is the significance of this diaspora? Alright. So you understand the attributes of this diaspora are that they are geographically spread out throughout the world. In 11 countries, more than 1 million. In 21 countries, more than 100,000. This diaspora comprises of people speaking different Indian languages. It's not a Hindi speaking diaspora only, right? Large part of it is Tamil speaking diaspora, right? But whichever region people are going from, they have stuck to their language, right? So for example, prevalence of Bhojpuri in Mauritius, right? Because most of the migration is taking place to Mauritius from regions like Bihar and Uttar Pradesh जो आज है. उस समय बिहार और उत्तर प्रदेश का जो आज का कॉन्सेप्शन है वैसा नहीं रहा होगा, बट लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं वो तो जानते हैं ना कि इस एरिया में ऐसे लैंग्वेज बोल रहे हैं. So that's something that you will see. And wherever they are, what they have tried to do is they have tried to maintain their cultural linkages with India, either in terms of spoken language or in terms of, for example, if you see the image of Diwali being celebrated in White House, it is the sign of the world, how the world has come or changed from what it was in the 1950s and 60s, much more racist in nature. So human beings can never become perfect. That is not our nature. But we are in the process of perfecting ourselves. That's always our ideal. We never reach it. Alright? You never reach your ideal. If you reach your ideal, then there is no purpose for you on earth. Alright? But we always pursue our ideals. So that's something that is another attribute of Indians. Cultural identity, cultural connection, language, festivals. Alright? Rishi Sunak coming out of his house and
lighting the diya. Abhi Rishi Sunak's staff was served a pongal breakfast. All right. So that is something that tells you that wherever Indians are going or any community goes, they would like, if they are allowed to, they would like to preserve their culture. All right. So that's something that is also their attribute. And now you will also see that this diaspora, many in this diaspora have now either acquired top political positions, administrative positions. All right. So in older diaspora, you will see this was earlier the case. For example, in Mauritius, more than 60% of population is of Indian origin. So presidents and prime ministers have mainly been of Indian origin. But you also now see this starting in new diaspora. For example, US, right? Kamala Harris's example. So achievements is another attribute of it. So now how is it significant for India? So one, the diaspora has been variously referred to as India's official ambassadors by Prime Minister, by Foreign Minister, right? So India's unofficial ambassadors, right? India's cultural representatives, and contributing to India's image by their work, ethics and integrity. All right. So Indians are adding to India's image. So thereby you can always say that it is an important part of India's soft power potential. All right. ये इंडिया का सॉफ्ट पावर है ये कहने के बजाय आप कहें कि इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर पोटेंशियल. All right, it contributes one element of India's soft power. All right. Second, you will also see that apart from being unofficial ambassadors, the diaspora is instrumental in advocating causes important for India. All right, advocacy for causes important for India has also been an important contribution. Example, when I was talking about Indo-US nuclear deal, I gave you the example that how Indians also lobbied with their representatives to support this effort. All right. So advocating India's causes. You can see various examples. Some people are protesting for this, some people are not protesting for this. There may be clash in some parts of Indian diaspora also. So you always focus on the controversy. But can you also focus on the part that this is where you have Indians advocating different causes, and many a times these causes are important for India. All right. So then moving forward, they also contribute economically. All right. So what I will say is that Indian diaspora has contributed to the creation of transfer of knowledge and capital through which India may benefit. All right. So they have contributed to the creation of a network of knowledge and capital. All right. Through which India has benefited. ठीक है. आज पूरी दुनिया में हम यही बात करते हैं ना कि टेक्नोलॉजी चाहिए या फाइनेंस चाहिए. टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंगेजमेंट से भी आ सकता है, बट टुडे इफ यू सी हु इज कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स अल्टीमेटली स्टेट के पास पावर है, पर स्टेट के नेताओं के पास समझ हो टेक्नोलॉजी की तब तो. दैट्स द स्कैरी सिनेरियो कि आप अपने नेताओं का ईगो बूस्ट करते जा रहे हैं, आपके नेता अपनी स्किल बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, एंड टेक्नोलॉजी इज बीइंग अंडरस्टूड बाय ईदर एलॉन मस्क और फेसबुक का कौन है, मेटा, मार्क जकरबर्ग. इनके पास कभी कभी आपको लगता है कि नहीं लगता है कि दुनिया के कई देशों में ज्यादा ताकत है और आपके बारे में ज्यादा जानकारी है क्योंकि इंटरनेट से चिपके रहते हो. ठीक है. सो लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्रैकिंग यू, प्रोफाइलिंग यू, आपसे ज्यादा जानकारी है आपके सर्विस प्रोवाइडर को आपके बारे में. ठीक. So basically what we are saying, this transfer of knowledge and capital is very simple. When somebody goes away from their hometown, they are creating a trail. All right. Evolution में क्या पढ़ते हो, ये पढ़ते हो कि भाई पहले तो एक इनिशियल पायनियरिंग जनरेशन आएगी, है ना, है ना, उसके बाद उसके सब स्ट्राटा के ऊपर उसके बाद की जनरेशन आएगी. ठीक है. और उसके बाद तो सिंपल बात है, जब whenever somebody, and सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हो, that how caste has transformed in various ways, various networks. So for example, in a factory you will find
workers from the same region. All right, the recruiter of the worker would prefer the person from their region, their caste also. So that's why caste region plays out. Sociology में भी आप पढ़ते हैं. So what is happening? कोई गांव से जाता है काम करने के लिए, तो उसके बाद और लोग जाते हैं. ऑल राइट, इसी पे बहुत सारे लोग लोकल गाना भी बनाते हैं, जिनको अगर अपने लोकल कल्चर से ही समझ में आता हो. तो आप दुनिया को आंख खोल के देखें, तो आप शहर में हो या गांव में हो, दुनिया आपको समझ में वैसी ही आएगी. तारे, चांद, यूनिवर्स की कल्पना करने के लिए अंग्रेजी भाषा की जरूरत नहीं है. तो कई बार क्या होता है कि जब लोग आते हैं छोटे शहरों में तैयारी करने, तो उनके अंदर एक जिद होती है कि मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं ऐसे ही हूं. एंड सम पीपल थिंक दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ देयर पर्सनालिटी. इट इज नॉट. जहां जहां गए हो वहां वहां से कुछ कुछ सीखो. हैव योर कोर बट लर्न, अदरवाइज आप पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में रहना जानते हैं. ठीक है, तो डायस्पोरा जब जाती है, जब कोई पहली बार गया होगा, उसको किसी ने बताया नहीं होगा कैसे जाना है, कहां टिकट खरीदना है ना. तैयारी के लिए दिल्ली आना होता था पहले, तो इतना आसान नहीं था. आज तो सबको सब कुछ पता है. तो जब सबको सब कुछ पता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि कभी ये काम किया होगा उन लोगों ने जिन्होंने पहली बार ये फैसला किया होगा. दे मस्ट हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गो अवे फ्रॉम माय होम. राइट, सो दे ट्रेस द पाथ. सो दैट इज व्हाट द डायस्पोरा इज आल्सो डूइंग. राइट, जिस भी कॉलेज से आते हो, for example IITs, why are IITs IIMs important? Because it has a network effect. If you apply to any company, if you know some senior who is ready to push your paper forward, आपका काम आसान हो जाता है. So this is the network that we are talking about. So Indians are becoming CEOs, Indians are becoming technology में India. जब when I was growing up in the 1990s, India getting into IITs was still as big as it is today. And after getting into IIT, people would like to go abroad. ऑल राइट, लिबरलाइजेशन का जमाना शुरू हुआ था और कम ही लोग जाते थे बाहर, जानकारी कम थी, इतना नंबर नहीं था. आज वो प्रोपोर्शन बढ़ गया है. दैट ऑल्सो शोज यू द नेटवर्क इफेक्ट. ऑल राइट, द मोमेंट यू डिस्कवर अ पाथवे, इट बिकम्स रेप्लिकेबल. राइट, इंडियंस इन प्रोमिनेंट पोजिशंस और पोजिशंस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट मे टेक सच डिसीजंस विच मे बी फेवरेबल फॉर इंडिया. इंडियंस हु लर्न स्किल्स, जैसे पहले हम एक पर्सपेक्टिव होता था ब्रेन ड्रेन. All right, Indian talent going outside of India is brain drain. Now that brain drain can be seen in terms of brain gain also. If the Indians going abroad, learning skills which are not available here, come back to India, they are bringing those skills also. कई तरीके से आप समझ सकते हैं. So it's the process of translating brain drain into brain gain. China has benefited a lot from it. We also are benefiting from it, right? So that's the other significance of this diaspora. And thereby you can also add some numbers. For example, remittances कर रहे हैं. Did you see anything? That's why we say look at PIB. PIB देखोगे तो PIB पे आपको बहुत सारा चीज मिल जाता है, कई बार डेटा मिल जाता है. ठीक है, चलो PIB नहीं देखा, न्यूज़पेपर देखा. न्यूज़पेपर्स हैव बीन रिपोर्टिंग ऑन दिस. ऑल राइट, कुछ नहीं किया तो अपना पुराना मटेरियल ही पढ़ लिया, प्रिंटेड मटेरियल जो है. तो अब जब जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लोगों की प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो काम नहीं करना चाहते, और इस काम नहीं करने की आदत के लिए जिम्मेदार किसी और को ठहराना चाहते हैं, क्योंकि आप यू आर नॉट टेकिंग अ ब्रॉडर व्यू ऑफ लाइफ. कि जब पहले केवल किताबें थी, लोग नोट्स छुपा के चलते थे, तब भी कंपटीशन था. आज सबके पास किताबें हैं और किताबें, इंटरनेट है, अपना दिमाग आप फोन में लेके चल रहे हैं, तब भी कंपटीशन है. द ओनली डिफरेंस इज नाउ मोर पीपल आर राइटिंग द एग्जामिनेशन बिकॉज दे थिंक इट इज पॉसिबल. अर्लियर द कंपटीशन वाज लेस, 50,000 people applying for the examination. At least I remember that time when 50,000 or so was the number of people who appeared in the examination. ठीक है, तो ये अंतर आता है. तो इसका मतलब फिर भी ये है कि आप ये सोचने लगो कि जितना सब दिख रहा है सब मुझे जानना चाहिए, तो अनमैनेजेबल है. आप ये तय करो कि मुझे इतना जानना है और इसको बार बार दोहराना है, ये मैनेजेबल है. तो आज के जमाने में भी वो कोर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है. दैट फॉर्मूला हैज नॉट चेंज. ओनली बिकॉज देयर इज too much visible today, that does not mean that you have to be a master of everything. ठीक है, तो आगे चलते हैं. हमने गल्फ डायस्पोरा के बारे में बात की, 1970s में फॉर्म हुआ. सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं. That's why you will see India is the largest recipient of remittances in the world. All right. This year the World Bank's estimate is, late December के आसपास एक रिपोर्ट आई थी. World Bank estimate is that India's remittances would cross $100 billion this year.
But in any case, India has been the topmost recipient of remittances traditionally, right? So you can see some numbers here. This is the number. 7 फरवरी को पीआईबी पे ये सूचना थी, और ये कोई नई सूचना नहीं है, आप पहले भी पढ़ रहे तो आपको पता होगा, अखबारों में भी आया होगा। अगर आप मिस कर रहे हैं इसको तो इसका मतलब है कि आपका फोकस कहां है आपको तय करना पड़ेगा। अखबार आपको कई चीज सिखा देते हैं, पब्लिक सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एनीवन कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस, राइट। तो कोचिंग में आने को अपना हिंड्रेंस मत बनाइए, राइट। सम पीपल कैन टर्न हेल्प इनटू डिफिकल्टी, राइट। कोचिंग में आगे इसका मतलब ये नहीं कि आपके अपने एफर्ट की वैल्यू कम हो गई है, आपका एफर्ट गाइडेड हो सकता है, पर वो जो एफर्ट है ना, मेहनत, वो आपको ही करनी है, कोई और नहीं करेगा। These numbers publicly available, they are simply telling you the pattern. 69 billion US dollars in the year 17-18, which for the latest full year for which the number is available is more than 89 billion. 2021-22, India received 89 billion US dollars of remittances. This is concrete number of how capital is coming to India. All right, वो केवल FDI, हिंडनबर्ग, अडानी, मैक्रो इकोनॉमी नहीं होता। एक आप में से कुछ लोग शायद जानते हो ऐसे किसी को जो बाहर गया हो कहीं काम करने, और उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है जब वो पैसे घर भेजता है। तो उस जो घर में पैसे आ रहे हैं वो भी नेशनल इनकम में जुड़ रहे हैं, ठीक है, एंड दिस इज अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। All right, 89 billion US dollars. So it is around 2 to 3%. Remittances have accounted for around 2 to 3% of Indian GDP. And this is a, यहां पे जब हम 2 to 3% कहते हैं ना, it's a very large absolute number. All right, 87 billion is a large number which is coming to our exchequer. Important source of forex. All right, foreign earnings when they are expatriated, repatriated back to India. So this is the pattern. So that is the contribution. Then you will also see, for example, RBI. RBI is a very good source of economic data. RBI के लोग रिसर्च का काम करते हैं और पेपर निकालते रहते हैं। किसी भी चीज के बारे में डाउट हो और थोड़ी समझ डेवलप कर पाए और मुश्किल का सामना करने की हिम्मत हो तो वो रिपोर्ट्स देखने लगो। रिपोर्ट्स की यूटिलिटी आपके लिए कम तभी आती है जब आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, है ना। हर रिपोर्ट में कुछ सिंपल पार्ट होता होगा। तो आरबीआई के हिसाब से एनआरई डिपॉजिट्स, जो बाहर रहते हैं उनके लिए एनआरओ डिपॉजिट की तरह की चीजें होती हैं। एनआरई एनआरओ अकाउंट खोल सकते हैं आप, ऑल राइट। तो जो एनआरआई डिपॉजिट्स है एनआरई एनआरओ अकाउंट्स के फॉर्म में, दैट्स ऑल्सो सब्सटैंशियल, राइट। दैट्स क्लोज टू 140 बिलियन यूएस डॉलर्स। सो स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है, सुना है कभी आपने? स्टॉक फ्लो, स्टॉक वो नंबर जो बहुत लंबे समय से इकट्ठा हुआ है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब आप पढ़ते होंगे। तो कभी आपको एज ए प्रोसेस के रूप में आपने देखा है इसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो कुछ ड्यूरेबल बनाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो आपका डे टू डे खर्चा है, उसका कुछ पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। सो ये है फ्लो का नंबर। एंड इफ यू लुक एट स्टॉक, मोर देन 140 बिलियन यूएस डॉलर्स इन इंडियाज एनआरआई accounts. All right, so that's the number that should give you the significance of this diaspora. बात समझ में आ रही है आपको? What is the significance of this diaspora? Right? Rest is up to you. अब आप इसमें और क्या जोड़ना चाहते हैं, ठीक है? Rest is up to you. What you would add to it, what you observe, which you think now would be your special point, right? ये आपके इनिशिएटिव है। लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन करा दो, इंट्रोडक्शन लिखना सिखा दो, कंक्लूजन लिखना सिखा दो। ये कई लोगों को वैल्यू एडिशन लगता है। फिर कोई बोलेगा कि ये तो मेरी मेन से बहुत मदद मिली। अब इसके बाद आप ये देखना भूल जाते हैं कि मेंस के बाद भी एक चरण होता है जिसको कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बाद भी एक चरण होता है जिसको कहते हैं रिजल्ट। सो व्हाट यू फेल्ट हेल्प्ड यू, वेदर इट ट्रांसलेटेड इनटू रिजल्ट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो आधी पिक्चर देख के आप या तो पैटर्न बना लेते हैं या ये समझने लगते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, आपके ऊपर है। इसलिए मैं कहता हूं कॉन्स्टेंट एफर्ट, कभी भी आप परफेक्ट नहीं है। आप अपना ऑप्टिमल स्टाइल फाइंड करें फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कीप इंप्रूविंग ऑन दैट ऑप्टिमल स्टाइल। और वो ऑप्टिमल स्टाइल तभी आता है जब आप रोज बताएं कि ये मेरा स्टाइल है, यानी दिस इज माई रीडिंग स्टाइल। जब रोज पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा मुझे पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है। जैसे कभी आपको पता है कि 1 घंटे में कितने पेज पढ़ लेते हो? अधिकतर लोगों से यह सवाल पूछो तो वो
आ करने लगेंगे, क्योंकि पहले तो वो पेज नहीं पढ़ रहे, है ना, दूसरा वो पढ़ ही नहीं रहे, तीसरा वो वीडियो देखने को और स्क्रॉल करने को अपनी पढ़ाई मान रहे हैं। अगर आपने अपने स्किल्स पे ध्यान दिया है तो क्या आप बता सकते हैं कि आप कितने पेजेस पढ़ लेते हैं एक घंटे में? एनीवन? 15? हाँ? हाँ? 10? तो देखो, एक 15 पे एक 10 पे, तो अंतर आ गया ना। तो इसका मतलब है कि आपको शायद कुछ और करने की जरूरत है, इसका मतलब है कि आपको भी शायद और कुछ करने की जरूरत है ना। तो इस एग्जाम में जो एक न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर है वो है हार्ड वर्क। एनीवन हु इज केपेबल ऑफ हार्ड वर्क कैन ऑलवेज ब्रिज एनी काइंड ऑफ गैप which appears to them, right? But don't make the gap very big. अपने दिमाग में इतना बड़ा मत बनाओ, मैनेज कर सकते हो अगर मेहनत कर सकते हो, ठीक है। So this is the significance of the diaspora. Now if you want, before you get anxious, you can take a break, but keep the break to 5 minutes. All right, take a 5 minutes break. We continue with the diaspora. All right, level पे मैं नहीं कह सकता कि okay, because in the examination you may have to use shortcuts, है ना, क्योंकि हो ही सकता है नहीं आया तो आपने वो लिखा जो आपको समझ में आ रहा है इन द एग्जामिनेशन। बट आई कैनॉट से कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उस समय के बारे में सोचो, बिकॉज टाइम फैलेसी इज दिस ऑल्सो। हर चीज के बारे में ऐसे सोच रहे होते कल ही एग्जाम हो जाएगा। क्या कल एग्जाम हो जाएगा? क्या रशिया और यूक्रेन के बारे में समझ में आने के लिए मेरे पास और टाइम है? थोड़ा समय और बीतेगा, कुछ फाइनलिटी के साथ आएगा। तो अप्रोच ये हो जाता है कि कल ही एग्जाम होने वाला है, इसलिए आज ही जो बोला आज सब कुछ जरूरी है। अब ये माइंडफुलनेस वालों ने सिखाया है कि भाई आज में जियो। आज में जीने का मतलब ये नहीं है ना कि कल नहीं आएगा, है ना। आज के मतलब ये है कि आपके पास हमेशा वो प्रेजेंट मोमेंट होता है, उस समय जो कर रहे हो उसको फोकस करो। पर जब आप प्लानिंग एग्जाम दे रहे हो तो इसका मतलब ये है ना कि आप सोच रहे हो किसी कल के बारे में। तो जब प्लानिंग कर रहे हो तो ऐसे प्लान करोगे कि शुरुआत के फेज में ज्यादा टाइम लगेगा, तो क्योंकि उसमें डिटेल्ड काम करते हो। फिर बाद के फेज में रिवीजन के साथ और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग की ऑफ द एग्जामिनेशन, देन योर टाइम वुड रिड्यूस। सो यू कैन नॉट, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स, टाइम एलिमेंट, कंटेंट एलिमेंट। You cannot say that for the first day and to the last day my work would be the same, work ethic would be the same, maybe the amount of work that you do the same, but the methods may change. It is precisely because आपकी capability बढ़ती है। जैसे मैं जो 25 साल की उम्र में पढ़ता था, the thing that I read at the age of 25, I read a lot of books, but some books make sense to me now. All right, some books make new sense to me now. राइट जब भी जितनी बार पढ़ते हो तो मुझे क्या जरूरत है कोई किताब जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी उसको आप पढ़ने की? इट्स बिकॉज वो एक 25 साल के लड़के ने पढ़ी थी। आज जब व्हेन आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टुवर्ड्स माय मिडिल एज, तो उसमें क्या कोई अंतर है? ऑफ कोर्स अंतर है, समझ हो गई, ज्यादा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो गई चीजों की। सो नाउ आई कैन रीड क्विकली। तो आपके लेवल की जो डिफिकल्टीज है ना, कई बार उसको आपको एक्यूरेटली समझना है और उसका जवाब पहले आपके पास है, तो सामने वाला हमेशा उसको हाँ बोलेगा क्योंकि वो जवाब हमेशा आपसे आया है, एंड देन चेंज कैन बी मेड, राइट। So let's move forward. Let's now look at the diaspora. We are looking at the diaspora. We have looked at some numbers. And now let's simply have an idea of how the government has engaged with the diaspora. All right. So not from anything else, you can have various phases. For example, you can read the Parliamentary Standing Committee on External Affairs report. I think it's the 16th report. Or if I'm not right about the number, at least in August current affairs, it has been covered. So you can say that there is one phase which is immediately post-independence. All right. So in the post-independence period, which say, let's say from 1947 to let's say the next period, which we can say is the period of liberalization. All right, post-liberalization period. So in the immediate post-independence period till liberalization period, the approach of the government or governments towards the diaspora were of course dictated by the circumstances and priorities of the time, right? So we can say that this era was defined by an approach of non-interference or what we can call benign neglect. All right, okay? So this is basically one way of describing it. Now if you are participating in a political debate, if you are interested in criticizing an individual, तो इस चीज को आप यहां से यहां ले जा सकते हैं, all right?
You can use your own words for that. जैसे हम जब पढ़ते तो कहते थे कि इस चौराहे पे किसी ने किसी को घूर के देखा तो अगले चौराहे पे जाके होगा कि उसने उसको गाली दे दी, उसके अगले चौराहे पे ऑन द नेक्स्ट स्क्वायर इट वुड बी कि पर्सन ए slapped person B, and when you travel a bit more the news would be that person A was murdered by person B, and then if you travel further this is how जिसको हम कहते हैं ना अफवाह ऐसे फैलती है, ठीक है. So understand that you can criticize soberly also, you can praise soberly also, and you can do both of these things, criticize or praise in such a way which would be awkward. अब बहुत ज्यादा प्रेज के चक्कर में चले जाए तो आप जो है साइकोफैंट बन सकते हैं. चम्मच, हर किसी को चम्मच की जरूरत होती है, ऑल राइट. और आप ज्यादा क्रिटिक हो जाए तो आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट ही बन सकते हैं, है ना. तो आपको डिसाइड करना है. सो दैट्स व्हाई आई से व्हेन यू हैव चोजन द ब्यूरोक्रेटिक पाथ इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द मिडल, ऑल राइट. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द middle, right? So that's basically the first phase, right, which we can say non-interference, characterized by non-interference or benign neglect. Why? Because neither the government of India is in a position to intervene decisively, nor the diaspora is settled enough. So intervening on behalf of diaspora, जैसे बहुत सारे लोग आज इस तरह से डिबेट करते हैं, right? So when you are understanding, जैसे हमको सलाह दी जाती थी कि एक पर्टिकुलर उम्र तक एक किताब नहीं पढ़नी, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो ये किताब मत पढ़ो, राइट. सो दैट्स व्हाई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस, क्योंकि हर समझाने सीनियर यही कहता था कि कुछ चीजें मत पढ़ो. कौन सी चीजें जिसमें आप ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं. जैसे मैंने किताब पढ़ ली थी व्हाई आई एम नॉट एन IAS, ऑल राइट. तो उन्होंने सारे कारण गिनाए व्हाई आई एम नॉट एन IAS. सो ऑफ कोर्स इट वुड अफेक्ट माय थिंकिंग, राइट. सो Khair, so that is there. So it would also have raised the problem of dual loyalty. All right, जैसे आजकल ये सवाल आता है ना कि पाकिस्तान चले जाओ, कोई कुछ बोलता है तो वो एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट का एक फॉर्म है. वो आर्ग्यूमेंट क्या है? खाते यहाँ का हो और गाते कहीं और का हो. तो वो तो उसमें भी हो सकता है ना कि भाई इंडियंस वहां जाके क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो अपनी टीम का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां के इंडियंस को कोई ऐसा बोलेगा आपको कैसा लगेगा? आप तो अपने देश वालों को बोलने में 2 मिनट पीछे नहीं हटते, राइट. सो इट इज नॉट दैट यू कैन नॉट हैव अ पोजिशन, पर एक जो सिविलिटी होती है ना डिबेट की, बात करने की, वो बनी रहनी चाहिए, राइट. अदरवाइज इट वुड ओनली लीड टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है. सो देन दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम दैट द डायस्पोरा इज सेटलिंग इन. वो जमाना रेसिज्म का जमाना भी है. इट इज नॉट वेरी इजी फॉर, सो देन दैट्स व्हाई द रिलेशन इज गवर्न इन दिस वे. So the interaction between the diaspora and the government is either governed by procedures. For example, a passport is issued by a government, है ना? A visa is granted by a government, right? So for example, the Immigration Act of 1983-84 is where you will find some elements of diaspora is there, because passport के साथ ही तो आप emigrate करेंगे ना. So Immigration Act, right? So either we have Citizenship Act or we have Foreigners Act, all right. पर डायस्पोरा के बारे में कोई एक्ट नहीं है, रिफ्यूजीज के बारे में कोई लॉ नहीं है. सो दिस इज बेसिकली हाउ थिंग्स इवॉल्व. सो इमिग्रेशन एक्ट इज देयर विच यू कैन से इज वन वे इन विच द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डायस्पोरा आर रिलेटेड. सेकेंड इज response in times of crisis. For example, one of the crises that Indian diaspora faced was in Uganda. All right, when there was a leader called Idi Amin. Now, Idi Amin notified the Indians to leave Uganda in 90 days. Right, Indians in Uganda were a prosperous community. They owned significant stake in economy, local economy. So there is always, आप पढ़ेंगे हर जगह, son of the soil movement, Bhumiputra movement. So in politics, these issues are also very common. What issues? Issues about the indigenous rights and other sections of society. So there is this phase under Idi Amin where Indians had to leave Uganda in a hurry. So there is some involvement of Indian diplomats in nearby countries in some form of facilitation. But you can't say that it was a decisive intervention at that point in time.
And then the third in this phase, where you will see interaction between diaspora and the government, is again a crisis situation. For example, evacuation of Indian citizens from the Gulf War. All right, when Iraq invaded Kuwait, after that a war started. American and America's allies, Saudi Arabia, etc., were part of that war. So whatever is happening, if the diaspora is threatened, then one thing that the government has to do is evacuate. Right? On that there is a movie called Airlift. ठीक है, तो वो बेसिकली एक और एग्जांपल हो गया कि इस तरह का एंगेजमेंट दिख रहा है, बट बाय एंड लार्ज नॉन इंटरफेरेंस, और यू कैन से बेनाइन नेग्लेक्ट. Regulatory interventions, for example, Immigration Act, or some limited intervention in case of crisis such as Ugandan crisis faced by Indian diaspora, or direct involvement, for example, in evacuation of Indians from Iraq. Right? Some people would say 80s was a different decade, be that as it may. Now 90s, what is characterizing 90s? This is called the liberalization era or the post-liberalization era, when India's economic policies change. All right. Now remember, from 1947 to 1992, कितने साल हुए? How many years? Which decade of independent India is that? तो कभी कभी हिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका हो सकता है, you divide 100 years into various decades, and in each decade there would be a defining event. All right. So remembering history in the context becomes easier. That 1910s में क्या हो रहा था, 1920s में क्या हो रहा था, right? And you will find that through this there would be a lot of repetition. History के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, पर हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन आसान है कवर करना. अब आपका ऑब्सेशन हो जाए किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ हिस्ट्री से, कि इससे बहुत सवाल आ रहे हैं. कई बार स्टूडेंट अपनी एनालिसिस लेके आते हैं एंड दे आर एडमेंट ऑन दैट कि मेरे हिसाब से तो ये होता है, तो फिर मैं उस स्टूडेंट को क्या बोलूंगा? आपको क्या लगता है मैं क्या बोल पाऊंगा उसको? व्हेन द स्टूडेंट इज एडमेंट अबाउट हिज नॉलेज, तो मैं क्या दे सकता हूं? तो भरा हुआ वो क्या रहा है ना. क्या भरे हुए बर्तन में आप पानी भर सकते हैं? इफ अ टम्बलर इज फुल यू कांट फिल इट विद वाटर, वाटर विद ओवरफ्लो. ठीक है. सो समटाइम्स यू शुड कीप दिस इन ऑल्सो माइंड. सो इन द लिबरलाइजेशन पीरियड व्हाट इज हैपनिंग? वन, India by need and by context, by necessity, is open to the rest of the world. That is that feature. India needs investments, India needs technology, and one of the sources of these can be the diaspora. Why? Because by now the new diaspora also has settled. By now it is very clear that in industry, in sciences, Indians have acquired a leadership position. It is also very clear that the diaspora always wanted to maintain links with India for cultural and emotional reasons. So thereby government of India now also is open to receive. The government is open to receive help, and the diaspora is capable of helping, mainly in the context of contributing to India's development, technology, knowledge, or finance capital. So that's where you will see this engagement starts acquiring a particular character or a concrete shape. All right, the culmination of which is what we see today. So in the 1990s, for example, the government of India issues what are called resurgent India bonds. Right, these are bonds issued for NRIs. Right, so that is how government mobilizes resources. Once you have studied economy, you understand this. So NRI specific bonds like resurgent India bonds. ठीक है. Then in 1997, 50 years of independence, India announces a measure which would enable to the diaspora to engage with India, which would create ease of engagement of the diaspora. So India announces initiatives like the PIO cards, persons of Indian origin cards. What are these? These cards are nothing but multiple entry, long-term multiple entry visa. Right? So for example, PIO card was valid for 15 years, available to those who were either Indian citizens or either of whose parents were Indian citizens or their grandparents were Indian citizens. All right? And also then it meant that when you are coming to India, you are a foreign citizen, but you are not applying for different permissions. All right. For example, you don't need separate work visa, or you don't need a visa. Right.
So these initiatives are coming up, PIO cards. Then what you will see is that 2003-4 is a period in which also certain steps are taken. For example, in 2003, we start celebrating Pravasi Bharatiya Divas, 2003, 9th of January, which is the date on which Mahatma Gandhi returned from South Africa to India in 1915, if I'm not wrong there, right? So then that is another example of how diaspora engagement is improving. Then a committee is set up, all right, under Dr. L.M. Singhvi. So there is an L.M. Singhvi committee on Panchayati Raj also. But we are talking about this 2003 committee under Dr. Singhvi to study the overseas Indian community. All right, overseas Indians is another term for the diaspora. All right, so this committee constituted by the government comes up with a report, and the report of the committee then traces the diaspora, their problems, issues, etc. So this also gives a concrete shape to the engagement. 2004, government changes, a new Ministry of Overseas Indians Affairs is created. All right, a new ministry for the diaspora. So this also highlights diaspora engagement evolving. Then, moving forward, what you will see is that in 2006, we announced the OCI card. All right. Now, OCI card also has the same purpose, to create ease for the diaspora to engage with India. It is also a long-term but lifelong visa, multiple entry visa facility. In fact, it is that. All right. So OCI in 2006, that is also evolution of diaspora engagement. 2014, government changes. So now the Overseas Indian Affairs Ministry is merged with the Ministry of External Affairs. All right. So that's there. Remember, at that point in time, the government had come into power with a stated mantra of minimum government, maximum governance. उसका एक मतलब ये होता है, number of departments, ministries कम करना. खैर, so again now these issues are dealt by Ministry of External Affairs. And then what you will see is that we can say the third phase is recent times. All right. Sometimes people have a debate on 2014, post 2014, pre 2014. So the solution to that is a neutral term, which is recent years. Recent years can mean anything, whatever effect you would like to give to it. If you are a 2014 post 2014 fan, then too also it serves your purpose. I hope you are not dissatisfied. If you are a pre 2014 fan, that also serves your purpose. I hope you are not dissatisfied. That's up to you, right? So recent engagement, how does it look like? So building on what has been the case since 1992, post liberalization, that now India's diaspora engagement is much organized. So the recent changes have been advent of technology. All right. So social media engagement, ICT, e-governance in diaspora relations, all this is something which is facilitated by technology. All right. And इसीलिए अभी देखना बहुत सारे लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि I have kept up with technology. But I have not kept up with technology. Neither can I keep up with technology, because I know the rate of advancement of technology would always be faster than my cognitive growth. ठीक है? But still technology is something that would force you to adopt it. है ना? Few years back मैं स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करता था, फीचर फोन इस्तेमाल करता था, व्हाट्सएप पे नहीं था. Out of my own decision that I will not do it. But then sooner rather than later I realized that I have to use it, because I would not be able to function in the society effectively. But still some people have their own practices even now. They can afford it. Maybe class factor, maybe some other factor. So technology, social media, use of ICT, e-governance tools. But this evolution has also been accompanied, for example, by large acts of public diplomacy, mass engagement. For example, diaspora engagement programs as part of Prime Minister's foreign visits, right? So Wembley Arena in London, or in New York also, in Madison
Square Garden. So you will see such programs. So we can say that this is something that which is current aspect of diaspora engagement. A, the ease and the use of technology, where the MEA has a Twitter account, है ना? I'm sure कि उनका Instagram account भी होगा, though I have not seen it because मैं Instagram पे हूँ नहीं. तो लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि there are various ways in which diaspora now is engaging. All right, and maybe अगर आप सोचना चाहें तो आप ये भी तो सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स के अलावा डायस्पोरा एंगेजमेंट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय आपका फेसबुक फ्रेंड अगर फॉरेनर हो सकता है तो somebody from India who is living abroad may have also Facebook friends here, right? So there is another diaspora community which may be there. पर वो academic interest हो गया, ये आपका interesting point हो सकता है अगर आप ये observation को add करें, right? So this is basically the 3 phases of diaspora engagement, right? So again I am suggesting read these August current affairs. There you have the views of the parliamentary committee, right? Now parliamentary standing committee एक word use करता है that the government's engagement with the diaspora is defined by, तो ये jargons learn करने में आंसर राइटिंग में आसानी हो जाती है. डिफाइंड बाय व्हाट? तो आजकल अल्फाबेटिक सूप का जमाना है ना, हर चीज का एक्रोनिम बना दो. तो एक्रोनिम क्या? सो बाय 4 C's द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डायस्पोरा एंगेजमेंट इज डिफाइंड बाय 4 C's. क्या 4 C's? कनेक्ट, केयर, celebrate and contribute, right? It is defined by 4 C's: connect, care, celebrate, contribute. All right, India is connecting with the diaspora, diaspora is connecting with India. Care, diaspora cares for India, India cares for the diaspora. All right, contribute, diaspora contributes to India, India contributes to the welfare of the diaspora, right? And celebrate, diaspora celebrates India's success and we also celebrate. कभी कभी तो थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी, जैसे ऋषि सुनक जो है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, है ना? ही इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एंड इज अ ब्रिटिश सिटीजन एंड आइडियली ही शुड बी लॉयल टू ब्रिटेन. ठीक है, सो दीज आर सिंबॉलिक थिंग्स till where and how diaspora, because if you look at Sunak's parents also, they first became a part of diaspora by being in Africa. वहां से वो सुनक साहब गए हैं कहा? यूके, और वहां के प्राइम मिनिस्टर बने, राइट? तो अलग अलग तरीके से डिबेट हो सकती है, आप देख सकते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल. ठीक है, चलिए अब कुछ चीजें समझ लेते हैं, कुछ चीजें मैं टेक्निकली समझा देता हूं. एनआरआई जो हम कहते हैं प्राइमरीली कम्स फ्रॉम टैक्स क्लासिफिकेशन. ऑल राइट, broadly for the purpose of understanding, we understand that out of this 31 million size of the diaspora, 13 million we can say are those who fall under the categories of PIO or OCI, right? Persons of Indian origin as a generic reference to recent migrants, all right, and OCI as a technical reference to those who have registered for being OCIs, right? And NRI are Indian citizens, right? So 17 million to 18 million, 18 million closely is the size of the NRI in this diaspora. All right, so means India is engaging as diaspora with people who are not Indian citizens and also with people who are Indian citizens. So who is an NRI? Again, as I said, it comes from tax laws, income tax law, right? And the simple idea is anyone who stays out of India for more than 182 days. All right, because for being a resident, the definition is that if you have lived in India in the preceding financial year for 182 or more days. All right, so more than 182 days, if you are living outside of India, you are eligible to be classified as an NRI. That's the simplest definition. But then see, Government of India taxation law में change आता रहता है, right? So for example, our purpose is to tax any income which has any India connection. All right, either it is being paid in India, all right, or either it is being earned in India, right? But not the income which is generated outside.
ठीक है, तो टैक्स के अंदर बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, बट जनरली अंडरस्टैंड 183 डेज और मोर आउटसाइड ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर. ऑलराइट, चलिए अब कुछ कैटेगरीज के अंदर इसको 120 दिन भी लाया गया है. ठीक है, लेकिन ये अभी भी बाय एंड लार्ज द मोस्ट, द ब्रॉडेस्ट, सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. ठीक है, अब देखते हैं ओसीआई, राइट, बिकॉज दैट इज द सेकंड टेक्निकल कैटेगरी. बट एनआरआई के बारे में आपको ये याद रहेगा ना कि दीज आर इंडियन सिटीजन्स. ठीक है, चलिए ओसीआई क्या है. तो जैसा आपने कहा कि ओसीआई इज पार्ट ऑफ अ स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2006, वेयर ओसीआई कार्ड्स वर announced to be issued to people of Indian origin, those who are interested and those who apply. So of course ये प्रोसेस सही होगा, आप अप्लाई करेंगे तभी ओसीआई बनेंगे. पीआईओ इसीलिए जेनरिक कैटेगरी है क्योंकि आप, if a person was Indian citizen at any point in time, they are either of their parents or either of their grandparents were Indian citizens, so that you can call them person of Indian origin. All right, OCI, part of government of India scheme. What is it? It's a, in simplest terms, lifelong multiple entry visa facility. If you register for it and approved for it, then it means that what you have is a lifelong multiple entry visa facility, right? So you would be given a card, but that is not your passport. You still hold the passport of your own country. And understand, since India does not apply for dual citizenship, so there is no question of any such class of citizenship to exist. So technically देखें तो क्या है? It's a lifelong multiple entry visa facility. So then who is eligible for becoming an OCI, right? Any person who was an Indian citizen at any point in time, all right, or either of their parents, either मतलब कोई भी एक parent, or either of their grandparents or great grand पेरेंट्स. जब पीआईओ में था ग्रैंड पेरेंट्स तक था, यहां पे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. तो एक तो नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ एलिजिबिलिटी, द कवरेज इज लार्जर, राइट. देन पीआईओ स्टेटस वाज नॉट अवेलेबल टू अ फॉरेनर स्पाउस ऑफ पीआईओ. ऑल राइट, फॉरेनर स्पाउस ऑफ अ पीआईओ को अवेलेबल नहीं था पीआईओ स्टेटस. But the OCI status is also open to a foreigner spouse of an OCI. Right? हो ही सकता है हमारा लड़का गया बाहर किसी और लड़की से शादी कर ली, विदेशी लड़की से शादी कर ली, या हमारी लड़की बाहर गई किसी विदेशी लड़के से शादी कर ली. ठीक है, तो क्या उनको मिलेगा? तो पहले इस बारे में नहीं थी क्लैरिटी. तो OCI में क्या है कि वो फॉरेनर स्पाउस को भी एलिजिबिलिटी है. इफ यू मैरी एन OCI, then you can also apply for an OCI card. ये तो कॉमन सेंस है. So then what are the, who can't apply for the OCI card? Even if you fulfill all these categories, criteria, who cannot apply? So first of all, this is not applicable to people who are ordinarily resident of countries like Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, China, Afghanistan, right? Mainly because if you go into citizenship law and some provisions of the Indian Constitution and you read it early, you will find that some provisions were time bound, and the idea of citizenship initially covered people who may not have been born in what was India, because India became a reality only after 1947, right? And I'm saying it in a very limited sense, क्योंकि अब इतना कोई काट के लगा दे India became a reality. I'm only saying as an independent state. All right, you can imagine that India existed for crores of years, millions of years. मेरे को क्या problem होगी? I'm not going to live to that time span, neither do I see history in that time span. All right, so that's something that is there in terms of OCI. So anyone who is a citizen of Pakistan, or their parents had been a citizen of Pakistan, their great grandparents had been citizen of Pakistan, or grandparents had been citizen of Pakistan, मतलब एक टाइम है जहां तक ये पॉसिबल है ना. तो तब आप एलिजिबल नहीं. पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चाइना. ठीक है. सेकंड, किन लोगों पे ये एप्लीकेबल नहीं है? एनीवन हु हैज सर्व्ड इन अ फॉरेन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट. ऑलराइट, इफ यू हैव सर्व्ड इन अ फॉरेन डिफेंस department, foreign defense ministry, foreign defense establishment, you are not eligible to become an OCI, right? And similarly, all these
have one common thing, that government ultimately keeps the right to whom to grant this status, whom not to grant. So basically, if anything disbars you under Indian law, that commonsensically would apply here. Now the government has made the disqualification also part of the law. So if you violate any Indian law, if you are convicted for that, well, your OCI status can be taken away. So what is the benefit of being an OCI? So of course, first of all, it's a visa facility. So it creates an ease of movement. For example, if a foreigner is coming to India, generally it depends on the duration of the stay, right? 60 days, 90 days. So you have to register, and wherever you are going, register with the FRRO, all right? Foreigners Regional Registration Office. Okay? So OCIs are foreigners, but they don't need to register with the FRRO, right? Similarly, there is no limitation to their duration of stay. Similar taxation purpose से अब देखो resident और non-resident apply होने लगेगा, right? So similarly, you also have the facility of using that to apply for various Indian cards. PAN card ले सकते हैं आप, driving license ले सकते हैं आप, you can open bank account, you can open special NRE accounts like the NRIs, all right? So that's something that is facilitated. You don't need to apply for separate education visa or work visa. That is facilitated. Facilities which are available to NRIs, for example, in case of admissions. बहुत सारी जगह पे कोटा होता है, NRI quota. So that is also available to OCIs. All right. And another maybe concrete benefit would be that an OCI can own and exercise ownership rights over non-agricultural land and property. All right. So OCI also has been guaranteed property rights, but on what kind of property? Non-agricultural. All right. And what is it that OCI can't do? So of course, it does not confer any political rights which are available to citizens. For example, it does not confer upon you the right to vote or right to contest elections. Right? It should be very clear. Similarly, you cannot hold agricultural property, because in agriculture, who is a farmer, who is not a farmer, the overlap between the central list and the state list, all right? So ultimately, it's governed more by state related consideration. Different states have different kinds of land laws. सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि भाई जिस स्टेट में आपको जाना है उसके लॉज आप वहां जाके सीखते हैं, एकेडमी में नहीं सीखते हैं, राइट? स्पेसिफिकली कौन से लॉ? रेवेन्यू और लैंड लॉ, जो कि अलग हो सकते हैं. सो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी कैनॉट बी ओन्ड बाय, or one cannot exercise property rights over agricultural property if one is an OCI. All right. And in certain sensitive areas, defense establishment, one may need special permission to enter. All right. So basically the idea is very simple कि भाई हम इंडियन सिटीजन होते हुए भी कई जगह हमको परमिशन चाहिए होती है. तो OCI होने के फायदे ज्यादा है, नुकसान तो नहीं है, but it promotes what? In connect of Indian diaspora with India, right? And also remember, the announcement over the merger of PIO and OCI card was made in 2015. So by 2017, the earlier PIO cards are now considered to be merged with OCI cards, because now only exists one category, which is the OCI category. ये आप समझ गए? ये दो चीजें आपको समझना था. ठीक है, ये कैटेगरीज हैं. अब तीसरी चीज हम क्या समझेंगे? तीसरी चीज हम ये समझेंगे कि ये डायस्पोरा है कहां कहां पे. ठीक है, ये है कहां कहां पे. तो एक ब्रॉड नंबर है आपके पास, स्प्रेड, ज्योग्राफिकल स्प्रेड तो अच्छा खासा है, बट सम कंट्रीज आर मोर इंपॉर्टेंट, राइट? 11 कंट्रीज 1 मिलियन, 21 कंट्रीज 100,000. अब एक एक करके अलग अलग इलाकों में चले जाते हैं. यहां पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, आप जरूरत के हिसाब से लिखते जाना. ठीक है, चल. तो नॉर्थ अमेरिका अभी रिसेंटली घूम के आए हम. कब? जब इंडिया यूएस का लेक्चर कर रहे थे. ठीक है. सो वहां पे क्या नंबर है? मैंने आपको पहले ही बताया, 4.5 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मीनिंग देयर
nearly 1% of the population, 10% of the doctors, 25% of startups. Where? In the Silicon Valley. कॉर्पोरेट लीडरशिप के एग्जाम्पल, पॉलिटिकल लीडरशिप के एग्जाम्पल हमने देख लिए थे. इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक टाइज. बात समझ में आई आपको? जो क्वेश्चन आया था तीसरे नंबर का 2020 में, उसमें ये एग्जाम्पल देने थे, ये नंबर्स देने थे, क्योंकि वर्ड लिमिट आपके पास है ही नहीं, आप कहानी और कॉजल रिलेशन बनाते रहे. यूपीएससी एग्जामिनेशन मेनली कोरिलेशंस के बारे में, रिलेशंस के बारे में, और उस रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है कोरिलेशन, है ना, क्योंकि सोशल साइंसेस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है. सोशल साइंसेस में मोस्टली हम कोरिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं, कॉजालिटी बहुत ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते. मॉडलिंग करते हैं, चीजें चेंज होती हैं, साइंस नहीं है ये. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उसमें भी देखना क्वेश्चन कौन से आते हैं, या तो पॉलिसी के बारे में या एप्लीकेबिलिटी के बारे में, है ना. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन वो नहीं आते जो आप क्लास में पूछ रहे होते हो, है ना, अपने टीचर से. तो ये बात आप ध्यान रखो कि क्वेश्चन पेपर पढ़ के चीजों को सीखने की कोशिश करो. ठीक है. दूसरा देश है कनाडा. ठीक है. इन नॉर्थ अमेरिका देयर ऑल्सो मोर देन 1 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. अगर हम देखें तो इट्स क्लोज टू 2 मिलियन नाउ, राइट, 1.8 मिलियन और सो. So this is also important number. There are 19 Indian origin MPs in today's Canadian Parliament. All right. 2019 when Justin Trudeau became the Prime Minister or thereabouts, he had apologized in the Canadian Parliament for the Komagata Maru incident. All right. And he had appointed 4 Indians in his cabinet, including the then Defense Minister, Mr. Harjit Sajjan. Right. So Canada, another North American country, 2 million people of Indian origin nearby. Right. So you will see, for example, Gurumukhi written in signage in, if you go to Canada, Punjabi spoken quite commonly. Right. So this is an important country. Right. Let's move forward. UK, according to the 2011 census, 1.6% people of Indian origin, which is the number is around 1.5 million. All right, contribute 6% to UK's GDP. 15 Indian origin MPs were elected in 2019 elections of the UK Parliament. All right, and you also now know that there are many people who have been appointed in the cabinet positions, right? So today's Home Minister or Home Secretary of UK, Suella Braverman, who was earlier known as Suella Fernandez, इन्होंने एक बयान दिया कि इंडियंस कम एंड ओवरस्टेज. ऑफ कोर्स बात है भाई, उस देश की मिनिस्टर उस देश के बारे में बोल रही है. अब ऐसे थोड़ी ना कि इंडियन ओरिजिन का मिनिस्टर बन जाएगा, वो कहेगा कि इंडियंस के लिए आना फ्री कर दो. ऑलराइट, बट स्टिल ऋषि सुनक अनाउंस्ड अ माइग्रेशन मोबिलिटी डील, 3000 वीजास एवरी ईयर. तो चलो ठीक है. 15 MPs of Indian origin in UK Parliament 2019 elections, many in prominent political positions. For example, Chancellor of Exchequer the Rishi Sunak, now the Prime Minister. Alok Sharma was President of or Chair of COP26. It's a cabinet level position. All right. And then Suella Braverman, उससे पहले Preeti Patel. These are all in political positions. Question यही कह रहा है ना. Similarly, Indians are among the major business owners in UK also. Indian investments contribute to job creations in UK. Second largest job creator is Indian investment in UK. And you have various people, for example, Lakshmi Mittal. All right, various names. आप सुनते रहते होंगे, आपको शायद ज्यादा पता हो अगर आप इंटरेस्ट लें तो. ये एग्जाम्पल्स हैं यूपीएससी के लिए. कई लोगों को लगता है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नाम आता रहता है अखबार में, आप चुन लीजिए, आप देख लीजिए. एग्जाम्पल है. यूपीएससी ये सवाल तो नहीं पूछेगा, पूछना नहीं चाहिए कि अभी अभी हाल में किस व्यक्ति को यूके का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया. यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछता. स्टेट पीसीएस पूछ सकता है. स्टेट पीसीएस ये भी पूछ सकता है कि क्या जन्म तारीख है. तो यूपीएससी में यह अंतर होता है कि आप इसके बारे में चिंता ना करें. अगर ऐसा सवाल आता है तो कोई बात नहीं, उस सवाल को सम्मान पूर्वक तरीके से या तो सॉल्व कर दें या तो साइड में कर दें. If you don't understand that would remain your problem. आगे चलते हैं. साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक. सो बेसिकली यहां पे क्या है, ओल्ड डायस्पोरा. नॉर्थ अमेरिका में मेनली क्या है, न्यू डायस्पोरा. ठीक है. अब यहां पे हम नंबर देखते हैं. 60% ऑफ इंडियन डायस्पोरा वी कैन से लिव्स इन ओल्ड डायस्पोरा
कंट्रीज. ऑलराइट, ओल्ड डायस्पोरा ज्यादा बड़ा है, ऐसा हम मान सकते हैं. ठीक है, ओल्ड डायस्पोरा इज बिगर. सो इफ यू लुक एट द साउथ ईस्ट एशियन रीजन एंड पैसिफिक आइलैंड्स, जैसा मैंने कहा था, सिंगापुर 8.5% of its population, Malaysia 8.5% of its population is of Indian origin. सिंगापुर अराउंड 9.1% पॉपुलेशन इज ऑफ इंडियन ओरिजिन. सिंगापुर में अगर नंबर देखोगे तो इट वुड बी मोर देन 2, नॉट सिंगापुर, मलेशिया, इफ यू सी द नंबर मोर देन 2 million. ऑल राइट, 9.1% ऑफ देयर पॉपुलेशन, बट नंबर देखो 2.5 million, बहुत सारे सोर्सेस कहते हैं, सर्टनली ओवर 2 million. ऑल राइट, नाउ इफ यू वुड सी, 3 presidents of Singapore have been of Indian origin, political contribution. Many cabinet ministers, जैसे अगर अभी भी अखबार पढ़ रहे हो, so if any time you read the news about Indian foreign minister meeting with Singapore's foreign minister, you will know that his name is of Indian origin, right? Vivian Balakrishnan. इसके अलावा मैंने आपकी क्लास शुरू जो हुई थी वो आपको बताया था कि भाई आपने ध्यान दिया FATF का कोई चेयर बना होगा इस साल, देखा होगा आपने, और मैंने नाम लिखवा भी दिया था, पर कोई बात नहीं, पढ़ने की आदत शायद अगले साल डेवलप हो जाए. ठीक है, तो ये इंडियन डायस्पोरा है ना. और इसके अलावा इफ यू लुक एट मलेशिया, मलेशिया रिसेंटली अपॉइंटेड फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज इट्स अटॉर्नी जनरल. इफ यू रीड वर्ल्ड हिस्ट्री, इफ यू हैव सम गुड बुक, कोई एक किताब तो पढ़ ही लेना, है ना. So you will learn about decolonization in Malay Peninsula, decolonization in Africa, Southern Africa, Western Africa. Western Africa पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो लोगों को वेस्टर्न अफ्रीका कहाँ ये नहीं पता, एक आध देश का नाम नहीं पता. और यूपीएससी जब सरप्राइज थ्रो करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इज नॉट इलॉजिकल, राइट. समटाइम्स यूपीएससी इज ऑल्सो इलॉजिकल, दैट इज समथिंग दैट आई विल से. उसके बाद वो क्वेश्चन कैंसिल भी कर देते हैं पीटी में कई. तो ये आपको समझना है कि लॉजिक क्या है इस चीज का. सो व्हेन यू, फॉर एग्जांपल, यू आर स्टडिंग समथिंग लाइक कोलोनियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन, स्टडी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट रीजन्स. ऐसे आपका नोट्स बन जाएगा, डीकोलोनाइजेशन इन एशिया, डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका, डीकोलोनाइजेशन एशिया के अंदर हो गया आपका मले पेनिनसुला. सो ए, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन कम्युनिटी सिंस इट वाज प्रेजेंट देयर was part of this decolonization process. For example, Malay Indian Congress was part of the larger national alliance which led to the creation of modern Malaysia and has been part of the subsequent coalition governments. ठीक है. Similarly, you will see Tamil is the prevalent culture in this part of the diaspora, Tamil language. That's why you will see some of Rajnikant's movies are based in that backdrop. All right, and you will also see that religious linguistic sentiment is often present when we talk about India-Malaysia relations. Similarly, if you go to another Pacific island nation, Fiji, close to 40% of its population, when I was quite, of course I had entered college. So at that point in time, Fiji had an Indian Prime Minister for a very brief duration. मैंने आपको बताया है उस क्लास में. All right, so 40% of Indian origin population. अब करंट अफेयर्स में भी आपको आज क्लास में मैंने मेंशन कर दिया कि फिजी में शायद कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑन हिंदी, राइट. सो अगेन दिस इज द डायस्पोरा नंबर्स. ठीक है, आगे चलते हैं. चलो आगे चलें. कहाँ? इंडियन ओशन रीजन. 70% of Mauritian population is of Indian origin. 70% of Mauritian population, meaning close to 70%. All right, 67, 68 कई बार नंबर दिखता है, तो हम कह सकते हैं close to 70% population is of Indian origin. That means that in politics you will see the effect of it. So in old diaspora, first, as I said, Indians acquired positions of leadership in old diaspora country, and then now it is happening in new diaspora country, है ना. So now if you see current Mauritian president, बड़े लंबे समय तक राम गुलाम फैमिली रही थी. So I don't remember the recent name. So it is Prithviraj Singh Rupun who is the current president of Mauritius. All right. So Shiv Sagar Ram Gulam, Naveen Ram Gulam, all these have been prime ministers, presidents of Mauritius. All right. And of course Hindi or related languages
are recognized, spoken in Mauritius also, right? So when you make, for example, a case of why Hindi, some people have been arguing about that Hindi should be a language of the UN. You should understand that the debate may have many parts. Some people strongly support this idea, some people may have reservations. Those who have reservations will always say, why Hindi? Hindi is not the only Indian language, there are multiple Indian languages. So in UPSC, it's not about what side you pick, it's your process, and whatever side you pick, your reasonable arguments, that would matter, and ideally the awareness of both. So when you are making, for example, the case of Hindi being a language at the UN, it would be good if you can point out where you will find Hindi spoken apart from India. आप केवल इंडिया के बेसिस पे नहीं कह सकते कि so many people speak. So Mauritius, India, Fiji, right? इस तरह के. Then in this region, Seychelles, 1770 for the first time it was habited, and now if you find this island also has around 20% of its population of Indian origin. लिखने के लिए बोल रहा हूँ, चेहरा देखने के लिए नहीं, ये तो लिखने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें तो कहानी नहीं सुननी है, मैं आपको नंबर बता रहा हूं, ठीक है. सो सेशेल्स हैज अराउंड 11% of its population of Indian origin. 11% of population is of Indian origin, right? And the current president, Wevel Ram Kalawan, right? Wevel Ram Kalawan, खिलावन होता हो बहुत सारी जगह पे नाम राम खिलावन, राइट? इस तरह का. सो वेवल राम खिलावन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है. रियूनियन आइलैंड्स, बात हुई इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में. अगेन दी around 30% of its population is of Indian origin. All right. So it's a French territory, and you should remember that French were till a particular point in time colonial powers in India. They control territories like Pondicherry, and in Pondicherry you will still find the imprint of French culture. All right. आगे चलते हैं, चलिए. So now we talk about Africa. So again, Africa is a continent where the diaspora is created from the British period itself, and the movement has continued also. All right. So this diaspora then is of significant size, of around 3 million is the size of Indian diaspora in Africa, around 3 million. Majority of this is concentrated in South Africa. साउथ अफ्रीका के साथ तो बहुत सारे लिंकेजेस निकाल सकते हैं. महात्मा गांधी विजिटिंग देयर, महात्मा गांधी later acting as an inspiration to the African National Congress. Mahatma Gandhi may have also inspired somebody else in America called Dr. Martin Luther King. Right? This is UPSC preparation. Once you know the story, you can correlate a lot of things. पर उसको लिखना is the art. और मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था, and I still agree whenever we discuss these kinds of things. He said, लर्निंग राइटिंग इज लाइक लेबर, लाइक फिजिकल लेबर. जैसे एक मजदूर रोज बिल्डिंग बनाने के लिए अपनी बिल्डिंग के साइट पे जाके मजदूरी करता है, भारी वजन उठाता है, वैसे जिनको भी राइटिंग सीखनी है, whosoever wants to learn writing should write every day. Whatever you want to do it consistently and every day. That's how you will become. Otherwise आप टीवी पे देखते रहेंगे, लैमेंट करते रहेंगे कि मुझे नहीं आती, और फिर ये जिद करते रहेंगे कि सामने वाला आपके जैसा बोले, राइट? तो कई बार मेरा when I am speaking, I find that my way of speaking changes with batches, है ना? कई बार ऐसा होता है. तो आप आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. मैं यही कहूंगा कि आपस में एक दूसरे को पॉजिटिवली प्रभावित करें. कैसे? डू योर वर्क, राइट? सो अगेन लेट्स राइट द नंबर्स. 1.3 million people of Indian origin in South Africa, 3 million of total in entirety of Africa. And यहां पे बढ़ेगा, because that is an continent of economic opportunities. और जहां भी economic opportunities है, Indians will go. All right. So that's something that you should understand, right? Now Indians have been important part of the African National Congress. All right. Sometimes some Indians are notorious for partaking in corruption in those countries. For example, the infamous Gupta brother story आई थी. एक बेचारे प्रेसिडेंट हो जाते थे, जैकब जुमा, उनकी कुर्सी खा गए, उनके दोस्त थे. सो ये भी हो सकता है कि ऐसा हो. खैर, बट पॉजिटिव एग्जांपल देंगे. ये कहानियां आपको दिखाती हैं कि इंडियंस आर प्रेजेंट देयर, राइट? चलिए और देख लेते हैं. ईस्ट अफ्रीका, कीनिया, अराउंड 100,000 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. तंजानिया 90,000. तंजानिया इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कंट्री. इफ यू लुक एट
The map you will know why, because it is on the coast. All right. Tanzania 90,000 people, Uganda 15,000 people. Right. So in 2021, a riot had broken out in Africa where Indian businesses were targeted. I had written an article then on this issue. So sometimes these issues are in news because of what is happening in that particular region. Right? आगे चलते हैं Caribbean. Caribbean. 1,43,000 is the population of indentured labor which traveled to one such prominent island called Trinidad, जिसको आप वेस्ट इंडीज कहते हैं, वो क्रिकेट की टीम है. All right. These are all different Caribbean islands. That would be the right reference. It is not West Indies. West Indies समझने के लिए ठीक है, क्रिकेट खेलने आते हैं, but these are all. अगर प्लेयर्स को देखोगे इंडिविजुअली अलग अलग जगह से हैं, है ना? Trinidad, Tobago जैसे. So 143,000 Indians went to Trinidad, Tobago, and that still is the bedrock of the Indian community there. That large number. All right, 1,34,000 के आसपास सेटल हो गए यहाँ पे, right? And I'm talking about 19th century, right? So then let's look at the current number. 42% of the current population, so it would be around 5th generation Indians. All right. So 42% of the population of an island of Trinidad is of Indian origin. That means it may have certain political implications. So if you have heard of somebody called Kamla Prasad Bisesar, all right, कैसे सुनेंगे आप? अखबार पढ़ने लगोगे, न्यूज़ देखने लगोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा. कमला प्रसाद एंड गूगल, राइट? कमला प्रसाद बिसेसर, शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द करंट ईयर्स चीफ गेस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन. वो क्या है? डॉक्टर इरफान अली, प्रेसिडेंट ऑफ गयाना. ऑल राइट, मैप में देख लेना, इट इज इन साउथ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ गयाना. सिमिलरली एक और another gentleman was present on this occasion. The gentleman's name is Chandrika Prasad Santokhi, who is the president of Suriname. All right. Suriname's population consists of 27.4 people of Indian origin. 27.4% people of Indian origin are part of Suriname's population. Right. चलिए आगे चलते हैं. हो गया ये दुनिया भर का नंबर. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू आंसर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. ऑल राइट. मोर देन कहानी. कई लोगों को नंबर की वैल्यू समझ में नहीं आती अभी भी, तो कहानी को कॉन्क्रीट शेप देना ही यूपीएससी का गेम है. कहानी सबको पता होती है. यूपीएससी डज नॉट वांट टू लर्न कहानी फ्रॉम यू. यूपीएससी वांट्स टू लर्न अबाउट योर आर्टिकुलेशन स्किल, बिकॉज एक ही तो वो स्किल है जो आप यूपीएससी को दिखा पा रहे हैं ना इन द मेंस एग्जामिनेशन. वो आपके गांव का, आपके स्ट्रगल की कहानी तो नहीं जानता यूपीएससी, है ना. आजकल एक और प्रचलन चला हुआ है, हर किसी को शौक है अपने जीवन के दर्द बताने का, और दर्द से ही लोग इंस्पायर कर रहे हैं, या तो ऐसे इंस्पायर कर रहे हैं कि दुनिया में सब पॉसिबल है. यूपीएससी में नहीं चलेगा भाई ये सब. गोल बना सकते हैं आप, आगे बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, किसी के शब्दों से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है. और अगर जीवन के सबसे क्राइसिस के पीरियड में मान लो सजेशन की जरूरत है आपको, वहां पे आपको मोटिवेशन चाहिए, तो वहां पे भी किसी और का मोटिवेशन काम नहीं करने वाला है. मोटिवेशन काम करता है एक दिन के लिए. ऑल राइट. मोटिवेशन से अपने आप कुछ नहीं होता, ये आप समझिएगा. अगर आपको समझ में आ जाए तो जरूरत हम सभी को होती है, बट इफ यू कीप ऑन रिलाइंग ऑन मोटिवेशन, वे ऐसा ही होगा जैसे आप चीनी खा लो और दोबारा चीनी खाओ, तो दोबारा जब चीनी खाते हो मीठी लगती है. कुछ मीठा खा के कुछ मीठा खाओ तो क्या होता है? तो वैसे ही मोटिवेशन है. मीठा, मीठी बोली, मीठी भाषा, विनम्रता, जहां जरूरत है वहां दिखाइए, जहां जरूरत है वहां दिखाइए. हमेशा सिविल रहिए, लेकिन लर्निंग हमेशा केवल मीठी बातों से नहीं हो सकती. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. क्यों? बिकॉज वन पार्ट ऑफ लर्निंग इज फेलिंग, एंड वी आर नॉट टॉट टू हैंडल फेल्योर्स. हमें हमेशा बताया था कि जीवन में सक्सेस ही सब कुछ है, सक्सेस ही होगा. इसीलिए एक कहावत है कि फेलियर इज एन ऑर्फन, सक्सेस हैज 1,000 फादर्स. ऑल राइट. सक्सेस में सभी क्लेम करेंगे कि
कि मैंने तो पहले ही कहा था। फेलियर में हर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा कि मैंने पहले ही कहा था। ऑलराइट, काम करो, काम पे ध्यान दो। ये नंबर मिल गए आपको। चलिए, अगस्त का इसके बाद आप वो पढ़ लें, करंट अफेयर्स फॉर नोइंग अबाउट एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट द डायस्पोरा। ठीक है। सो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ अभी अभी, आपने क्या नोटिस किया? क्या नोटिस किया? प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, कहां हुआ? इंदौर में हुआ, मेन फंक्शन। तो देखो, प्रवासी भारतीय दिवस स्टार्टेड इन 2003. 2015 there was a decision taken to change the format. What is the format? The main Pravasi Bharatiya Divas convention takes place every 2 years outside Delhi. All right? किसी भी शहर में, पर दिल्ली में नहीं. Right? Every 2 years. Right? And in between, issue specific, outcome oriented, smaller conferences. Right? ऐसा होता है. ठीक है, तो इसीलिए वो इंदौर में हुआ, बिकॉज दिस इज द फॉर्मेट चेंज. नाउ मेन प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन एवरी 2 years in a city outside Delhi. In between, in Delhi, you have outcome based conferences. For example, in 2018, India had hosted a PIO parliamentarians conference. All right, where we had invited various people in politics of Indian origin from different countries, right? MPs, MLAs, etc. participated, right? So from that, one estimation came that around 200 people of Indian origin are in leadership position in various countries. Leadership का मतलब केवल president और prime minister नहीं, alright, important positions. तो ये हो गया आपका diaspora. I hope you will be able to answer the question. ठीक है? And anything else you will get from, as I am saying again, repeating, 2022 August current affairs. चलिए अब आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर देते हैं. तो इसका परिचय जो है वो ऐसे हो सकता है, ये आप पहले क्वेश्चन देखें, है ना? तो क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि ए, इट इज कवर्ड बाय करंट अफेयर्स साइकिल. नंबर 1, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर ऑर्गेनाइजेशन? तो पहला तो ये है कि आप ये ध्यान दो कि first organization that we had talked about in our class was FATF. When we are dealing with Pakistan. In South Asia, SASEC, BBIN, SARC, SDF, SARC Development Fund, BIMSTEC we did in detail. Southeast Asia, ASEAN, ASEAN-centered institutions, and also in a proper context, MGC. This is something that we did. Indo-Pacific, we talked about various initiatives, right? South or when we reached to Central Asia, we talked about SCO. We talked about any other organization, if you would remember. Many, actually, if you would go back. So, in Europe, European Union. So, wherever we have been, we have already been talking about organizations from which questions come. So, first is what we cover in the class. Second is what is there in detailed form in your printed booklet. Alright, if you look at part 2, it gives you the answer of what is a treaty, ठीक है, and Arctic Council, etc. etc. तो पढ़ने के लिए आपके पास है. दूसरा, करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. करंट अफेयर साइकिल 1 साल का होता है, ठीक है. तीसरा, whenever you are reading current affairs, there is also a basic to it. All right. So what is BRICS, etc. वो भी when you are reading any newspaper article worth its salt always tells you. So that's basically what I'll do today by looking at these questions. So this is a question about BRICS. All right. BRICS summits take place every year now. So please tell me, where was the last BRICS summit? Who hosted the last BRICS summit? China. All right. Before that, India. Right. जैसे this year India would be hosting SCO summit, I told you, and G20 summit. So this year is very important academically from the perspective of IR. बहुत सारे लोगों का बिजनेस बन जाएगा, बहुत सारे लोगों का एकेडमिक धंधा बन जाएगा, और आपको करंट अफेयर्स में बहुत सारा एकदम बम्बार्डमेंट आएगा कि यूपीएससी लगता है हर पेपर में ही G20 पूछेगा और कुछ पूछेगा ही नहीं. Please have a sense of proportion and understand there is a time to prepare for everything. This question 2014 comes because 2014 the summit of BRICS took place in Fortaleza. That is the first summit that Prime Minister Modi participated in it,
right? And this is a summit where some of the institutions of BRICS, like New Development Bank. Remember, when I was talking about China, I've already touched upon New Development Bank, AIIB, and when I was discussing current affairs, either it was September or October, I have already discussed IMF, World Bank, and these kinds of institutions. तो अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो वो आपके ऊपर ऐसे तैयारी भी होती है. करंट अफेयर्स बुकलेट अगले महीने में क्या डिस्कस कर रहा हूँ, PT365, वहां भी यही कर रहा हूँ. So if you want to prepare for it, that's where you understand that this is where you have to focus on. So 2014 क्या पूछ रहा है आपसे? The first summit of BRICS was held in Rio de Janeiro in 2009. Basic information है. First summit of BRICS took place in 2009, but not in Rio de Janeiro, but Russia, Yekaterinburg. All right? वो जो इंफॉर्मेशन इन बॉक्स आता है जिसको आप कहते हैं कि ये भी पढ़ा दो करंट अफेयर्स में, वो आपके पढ़ने के लिए होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. ठीक है. South Africa was the last to join the BRICS grouping. This is correct. BRIC was the first name. Brazil, Russia, India, China. These countries were talked about in the context of they being emerging economies, building block of future economy. The term was coined by Goldman Sachs analyst Jim O'Neill, and these countries adopted this acronym and started interacting in 2006. This interaction in 2009 acquired the level of summit. Since then, there have been various summits. So India hosted the summit, for example, in 2016. All right. And then India also hosted the summit in 2020. Right. The 13th summit, 2021. ठीक है. तो जब भी ये आएगा ये आपको दिख जाएगा. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. BRICS comes into existence as BRIC in 2006, acquires the form of a summit in 2009, Yekaterinburg, Russia, becomes BRICS with the joining of South Africa, which was agreed in 2010. South Africa joined the summit level at the 2011 summit. ठीक है. आगे चलते हैं. जिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी बात नहीं की. Which of the following organization brings out the publication known as World Economic Outlook? Very repeated kind of question. और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं पढ़ाऊंगा क्या? हर कोई समझने आता है क्लास में कि हर चीज समझा भी दो और हर चीज लिखवा भी दो, और फिर मैं उसको रद्दी में अगले साल बेचूंगा क्योंकि मैंने इतना लिख लिया कि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं बचा. तो ये रिपीटेड काइंड ऑफ क्या क्वेश्चन है ये? वो पहला क्वेश्चन आपको बताया कि हुआ तो समिट के बारे में या मेंबरशिप के बारे में हो सकता है. ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? पब्लिकेशन के बारे में. अभी आप आंसर कर सकते हैं इसका? हाँ, आप में से जो भी आंसर कर सकते हैं करिए. राइट. सो यूपीएससी इस तरह के सवाल पूछता है और ये रिपोर्ट्स अक्टूबर सितंबर के पास रिलीज होती है. बहुत सारे इंडाइसेस, बहुत सारे रिपोर्ट्स, जो आप अगर अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं स्पेशल तैयारी होती होगी. एक और क्वेश्चन इस तरह का हो गया. ठीक है. एमनेस्टी इंटरनेशनल. ठीक है. सी एक्शन ऑन एनजीओज, reports on NGOs, funding of NGOs, etc. has been in news. Particularly, some sources who are critical of the government approach say that, against Greenpeace, Amnesty International, etc., there has been a tighter approach. ठीक है. I will use only that word. अब जब ये हो रहा है तो इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लोगे, या एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसी चीज है जो किसी भी जनरल नॉलेज की किताब में आती है ना. यूपीएससी लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे? What is Amnesty International? यूपीएससी ये नहीं पूछ रहा अंदर जाके कुछ और. अवेयरनेस, तीसरी चीज सीखो, अवेयरनेस. What is Amnesty International? अगर आप अभी भी आंसर नहीं कर सकते तो आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ दें, क्योंकि आपने हिम्मत हार दी है. आपको लगता है कि कुछ पढ़ना कोई पढ़ाएगा तो मैं करूंगा. ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ रहे हैं आप, मतलब नहीं समझ में आ रहा है आपको ग्लोबल का, ह्यूमन का, तो मतलब आपको लैंग्वेज पे काम करने की जरूरत है. यूपीएससी आप लिए काम आसान बना देता है, जो कि मेरे लिए आसान नहीं है क्लास में. यूपीएससी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, या वर्नाकुलर मीडियम या इंग्लिश दोनों में पेपर छापता है. तो ऐसे आप समझ सकते हैं. तो क्लास में it's not only about content, learn the examination, right? So it's very simple. Anyone, if they can answer this question. B, it's a global human rights movement. यूपीएससी कहता है best possible option. Amnesty International mainly talks about
राइट्स ऑफ द अंडर ट्रायल्स, राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स, राइट्स ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ठीक है, अब आपको ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज का मतलब ही नहीं पता है, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन रट के चले जाएंगे और कहेंगे मेरा सिलेक्शन तो होना चाहिए। ये बहुत सिंपल सा ऑप्शन था, वेरी पुअर पीपल की मदद करने के लिए नहीं है। इफ यू नो अबाउट एमनेस्टी इंटरनेशनल, इट लार्जली वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। ठीक है, शर्म आती है कभी कभी अपने अवेयरनेस पे, कभी कभी शर्म भी आगे बढ़ने में मदद करती है। हमको शर्म आती है तो हम क्या करते हैं, शर्म से बचने के लिए अगली बार पढ़ते हैं। शर्म आना बंद हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पर सीखेंगे कितना ये हमें पता नहीं। शर्म जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, तो फिर हर चीज में यही डर लगता है कि मैंने कुछ कह दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी क्योंकि मैं गलत हूं। आप हर चीज को गलत सही के रूप में देखने लगते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं ऑप्टिमल बैलेंस ढूंढना है चीजों का। ठीक है, वो आप ढूंढे। ये अगेन करंट अफेयर्स, जैसा मैंने कहा उससे सोचने की बात नहीं, करंट अफेयर्स 2015, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। इट्स एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी हैव कवर्ड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है यूपीएससी का नेचर, इंडिया मेंबर है या नहीं है। अब आप शायद आंसर कर लें इसको, पर वैसे भी बाय नेचर ये क्वेश्चन आसान था। कितने लोग इस क्लास में जो नहीं कर पाएंगे इसका आंसर, इस क्लास में कितने लोग हैं जो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। देखो मैं जानता हूं कि ऐसे लोग होंगे जो आंसर नहीं कर पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं कि शर्म के मारे, सो माय नीज वाज आस्किंग मी कि मामा आई फील अफ्रेड माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर बैड। आई सेड व्हाई डू यू थिंक सो। शी सेड बिकॉज आई व्हेन आई गो टू स्टेज, मुझे बोलने में बहुत वो लगता है। मैंने कहा व्हाट आर यू थिंकिंग, यू आर थिंकिंग दैट अदर पीपल वुड लाफ। सो इफ अदर पीपल्स लाफ, उसने ऐसा चेहरा बना लिया, उसने ऐसा बोल दिया, इस तरीके से बात की, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जीवन भर आप अपनी पूंछी ढूंढते रह जाएंगे, विच इज राइट देयर इन ऑन योर बॉडी। ऑल राइट, पर अगर आप ये शर्म और झिझक छोड़ के, और यूपीएससी तैयारी में बहुत ज्यादा होता है, याद रखना, इंप्रेस करने की बीमारी, राइट, द डिजीज ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स। इंप्रेसिंग whom? Impressing whosoever is around you. All right, without learning the value of it. Impressing your friends. All right, कुछ लोग अभी भी आंसर कर रहे हैं, तो ये शाबाशी के तो है नहीं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेंबर इंडिया है नहीं, ये मैं क्लास में 5 बार बोल चुका हूं, अलग अलग लेवल पे 5 बार। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट का इंडिया मेंबर है, ये मैं साउथ ईस्ट एशिया में कह चुका हूं। और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज अ ग्रुपिंग ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये भी मैं साउथ ईस्ट एशिया में कह चुका हूं। सो नाउ असेसमेंट करिए अपना, वेयर आर यू फॉलिंग शॉर्ट, बिकॉज ये चीजें, दीज थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, दीज आर ओनली डिफिकल्ट वेयर, हियर, यहां पे। इफ यू करेक्ट दैट, योर प्रिपरेशन वुड बिकम इजियर। मूव फॉरवर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान। Again, another kind of question I am showing you from organizations. Did we talk about NPT somewhere? कहां? When we were talking about USA. बातें बताई मैंने आपको, कहानी भी मिल जाएगी, किसी न किसी करंट अफेयर्स की बुकलेट में आ जाएगा, वीकली में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, हाँ, आपका जो प्लान था कि मैं एक अपना थैला बना के जाऊंगा जिसमें काफी नोट्स होंगे मेरे, उसमें हर चीज हो, तो जरूरी नहीं है कि आपकी इच्छा के हिसाब से हो, पर ये क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं आप, अगर आपने ध्यान दिया है क्लास में। क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है कि देखो, पहले तो आधे लोगों को डर लगने लगता है इतनी लंबी लाइन देख के, चक्कर आ जाता है ये पढ़ने में, है ना, जैसे ही लंबा पैराग्राफ आएगा ये होता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी बोलने से पहले हमने भी हिंदी बोलना सीखा, या कोई भी अपनी मातृभाषा बोलनी सीखी, अपनी भाषा बोलनी सीखी, तो हमें पता है कि अंग्रेजी कैसी सीखी जाती है, कितना मेहनत लगता है ना। एंड आई ऑल्सो studied in universities and colleges where I know what is the relation with English of the people. But I also know that one who wants to learn, और आप पहले नहीं है जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं who cross the barrier कि मैं गांव से आया हूं, ग्रामीण बैकग्राउंड से आया हूं, मेरा सिलेक्शन, ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उनमें क्वालिटी क्या थी? सॉल्यूशन ओरिएंटेडनेस। शिकायत करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो शिकायत करने के टाइम को लर्निंग में इस्तेमाल करें। ऑल राइट, अदरवाइज अपना ग्रुप बना लें, हर जगह एक ग्रुप होता है जो आपको बताता है कि इंग्लिश वालों को तो कुछ नहीं आता, तुम्हें बहुत आता है,
तो अगर ऐसे ग्रुप में तो एक चीज सीख लो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। वर्क तो काम होगा। इसका आंसर बड़ा आसान है। एनपीटी के अंदर 5 देश हैं जो आर रिकॉग्नाइज्ड एज न्यूक्लियर पावर्स। कौन से हैं भैया? P5 है ना। तो आपने ये भी सीख लिया, तो इसमें अब आंसर देना आसान है ना। तो कई लोग आंसर देंगे इंडिया लिखा है, इंडिया के पास न्यूक्लियर बम है, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है एनपीटी में कौन से देश माने जाते हैं न्यूक्लियर पावर। आंसर इज वेरी सिंपल, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान नॉट सिग्नेटरीज ऑफ एनपीटी। सर्टेनली इंडिया इज नॉट, एक पता है एलिमिनेशन, इंडिया नहीं है तो पाकिस्तान नहीं, दूसरा पता चल गया एलिमिनेशन। आंसर कई तरीके से हो सकता है इफ यू वांट टू राइट। एंड माय मैसेज इज नॉट टू एनी वन, इट इज टू एवरीवन, जिसको भी रेजोनेट करे राइट। विच जिनका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना है या जो टॉपर बनने वाले हैं उनको शायद मेरी सलाह की जरूरत नहीं हो, पर जो एग्जामिनेशन को माइथोलॉजी मान के चल रहे हैं उनको अभी भी जरूरत है राइट। सो लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, काइंड ऑफ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट पीरियोडिकली। क्या है क्वेश्चन? पब्लिकेशन बेस्ड, 2015 में भी आ गया राइट। इट्स एविडेंस दैट दिस इज व्हाट हैपेंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स लुक एट दिस। एक और ऑब्सेशन है लोगों का, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, है ना। यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछा? द टर्म्स एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज अपीयर इन द न्यूज फ्रीक्वेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ। आंसर तो मुश्किल नहीं था, WTO। ठीक है, तो जब भी करंट अफेयर्स आएगा ना ये बेसिक चीजें बताएगी। अब आपने क्योंकि कुछ वीडियो देखा, आपकी इच्छा है कि मुझे वो चीज समझा देता कोई, आपके पास मन नहीं है कि विकिपीडिया नाम की एक चीज होती है जिसमें पहले जनरल लेवल की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। विकिपीडिया का हिंदी और वर्नाकुलर वर्जन भी होता है जहां हम जा सकते हैं। अब वो दिन का इंतजार करते करते टाइम निकल जाता है। क्वेश्चन लेकिन यूपीएससी आसान पूछ रहा है, कितना इतना ही पूछा कि ये जो शब्द सुनते हो किसके कॉन्टेक्स्ट में, राइट। WTO, simple newspaper reading. Let's move forward and please write down what are World Bank's publications, right? So these are 3 major publications. ऐसा नहीं कि यही छापता है वर्ल्ड बैंक, lot of papers, area region specific papers, blogs are published by the World Bank, but these 3 are major periodic reports. All right, World Development Report, Global Economic Prospects and Doing Business Report. ठीक है, तो क्वेश्चन आर टेलिंग यू कि यार बाकी चीजें याद रहे चाहे नहीं रहे, ये 3 चीजें याद कर सकते। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में होता है कि क्या याद करना है, कितना याद करना है, और कितना याद किए बिना काम नहीं किए बिना काम चल जाएगा। ठीक है, सो दीज आर दी रिपोर्ट्स। एंड अगेन आई एम सेइंग करंट अफेयर्स में मैं आए जिनको भी जानना है, एक महीने में टॉपिक है मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। When I start discussing it, what I do is, because it is available to every batch, I have discussed there World Bank and IMF, अगर आपको जानना हो उस बारे में। ठीक है, चलिए लिख लिया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कहीं नहीं मिलेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, 2 मेजर रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस ऑफ IMF। ऑल राइट, 2 major publications of IMF. So some information you may find you have a need to rote learn, right? But again that is covered by, अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ रहे हैं कुछ चीजें रिपीट होती है, रिपीटिशन से चीजें याद हो जाती हैं, राइट। बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ऑलवेज इज रिपीटिशन, उसी को रोट लर्निंग कहते हैं। अब उसमें कोई फॉर्मूला बना दे, माइंड पैलेस, मेमोरी ट्री, घास उगा लो, पेड़ उगा लो, महल बना लो, जो करना है कर लो, दैट्स ओनली अ टूल। All right, but you remember by repetition. You learn by what? Repetition. As a child, how did you learn? कोई काम बार बार किया, बैटिंग बार बार मिली तो बैट्समैन बन गए, बॉलिंग बार बार मिली तो क्या बॉलर बन गए, टैलेंट अगर थोड़ा था। ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा ना। यू रिपीट समथिंग एंड यू बिकम अ मास्टर ऑफ इट। यू रिपीट इंफॉर्मेशन, यू लर्न इट। ये बेसिक तरीका है। बाकी कोर्सेज बहुत सारे हैं इसके भी, आपकी मर्जी है। अब देखो एक और भयानक सा क्वेश्चन लेके आया मैं। 2016 FAO accords the status of globally important agricultural heritage system to traditional agricultural system
what is the overall goal of this initiative? My eyes are still working. गुड, आई टेस्ट भी कर लिया मैंने पीछे की स्क्रीन में पढ़ के. आगे देख लो तुम, तुम्हारे लिए आगे है ना. यही यूपीएससी की प्रिपरेशन भी है. दुनिया कह रही हो कि पीछे देखो, अगल में देखो, बगल में देखो, देखो, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ. ये नहीं कि मैंने बोल दिया. चलो, ये सवाल दिखा आपको. प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल. व्हेनेवर देयर इज करंट अफेयर्स देयर इज ऑल्सो फंडामेंटल. ठीक है. अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन पे ही इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को अगर एज ए क्लास में लेक्चर पढ़ाना हो तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ लेक्चर्स रिक्वायर्ड. बट आई एम गिविंग यू एविडेंस, आई एम ट्राइंग टू टेल यू द स्टाइल ऑल्सो. ठीक है. लुक एट दिस, इट्स अ प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर हो जाएगा. वैसे इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो ये है, टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस एंड देयर associated landscapes, agricultural biodiversity, knowledge system of the local community. So आंसर इसका अगर वंडर कर रहे हो तो इसका आंसर है 2 ओनली. ऑलराइट. सो नाम सजेस्ट करता है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम. हेरिटेज शब्द कुछ हिंट दे रहा है आपको. ठीक है. तो पहला ऑप्शन कह रहा है ट्रेनिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. भाई हेरिटेज को बचाना है, उसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड नहीं लगाते, पुराने मेथड को बचाते हैं. ठीक है. पढ़ लेना, अभी क्लास में नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन समझ लो जो समझा रहा हूं, क्योंकि पूरे क्लास के दौरान ध्यान रहे लिख नहीं पा रहे हैं हम तो. ऑलराइट. जितना लिखा होगा काफी होगा. ठीक है. तो ये हो गया. अब ये करंट अफेयर्स कैसे है? क्योंकि 2016 में ही ये जो है इनिशिएटिव बनता है एफएओ का. ऑलराइट. इट स्टार्ट्स इन 2002 बिकॉज 2002, उससे पहले एमडीजी, उसके बाद एसडीजी, इस तरह की बातें हम कर रहे हैं. अब उसके अंदर फूड, एग्रीकल्चर, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं. एफएओ जो है इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन रोम. ऑलराइट. एंड इट्स प्राइमरी फोकस इज ऑन एग्रेरियन इश्यूज, रूरल लाइवलीहुड इश्यूज, फूड सिक्योरिटी इश्यूज, न्यूट्रिशन इश्यूज. इतना जानना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी है. एक बार पढ़ोगे तो जान जाओगे. पर्पस बहुत जनरल होते हैं. ठीक है. 2016 करंट अफेयर्स क्यों? बिकॉज इट बिकम्स अ प्रोग्राम ऑफ एफएओ. ऑलराइट. सो ऑफ कोर्स न्यूज में आया होगा. यही मतलब होता है ना करंट अफेयर्स का, न्यूज में आया होगा. तो इसी से आगे के लिए सीखो कि क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है. राइट. सो इसका बेसिक क्या है? जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो क्या करना चाहिए? सो एज आई सेड, एफएओ इज व्हाट? is a specialized agency of the UN. All right. Works in what area? Mainly agriculture, agrarian economy, rural livelihood issues, food security, hunger. ठीक है. न्यूट्रिशन. अब इसके अंदर जो है इन्होंने एक प्रोग्राम को सपोर्ट किया, उसको कहते हैं GIHS. तो GIHS क्या है? Those who are online can always screenshot. उनके पास ये एडवांटेज है, जो क्लास में उनको मैं बता रहा हूं. क्या लिखा हुआ है यहां पे? रिमार्केबल लैंड यूज सिस्टम्स and landscapes which are rich in globally significant biological diversity. So it is about landscapes, it is about agricultural systems. What kind of agricultural system? Such systems because of their attributes may be globally significant. All right. Human beings can learn from it. Biological diversity evolving from the co-adaptation of a community with its environment. Traditional practices always develop when they are consistently practiced by a community in a particular environment. Right. That is what it is saying. With its environment, where it is located, its needs and aspirations for sustainable development. समझ गए आप इस बात को? पढ़ोगे फिर रटने की कोशिश करोगे, लेकिन तरीका यही है कि अपने लैंग्वेज के रिलेशन के लेवल पे समझ लो ना इसका मोटा मतलब क्या है, किस बारे में है ये. द ओवरऑल गोल क्या है? ओवरऑल गोल. सो इसीलिए जब अखबार पढ़ रहे हो तो देन व्हेन यू हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, जो मैंने लिस्ट बनवाई वो इसीलिए बनवाई कि ये प्रैक्टिस कर लो. रीड एंड साइड में लिखते जाओ कि ये देखना है, और इंटरनेट का इस्तेमाल बस सिंपल उसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लो. ठीक है. आफ्टर हैविंग रेड. तो पर्पस क्या है? एक बार पढ़ लिया. So it is nothing about expertise. Identify and safeguard globally important agricultural hedge system and their associated landscapes,
agricultural biodiversity and knowledge systems through catalyzing and establishing a long-term program to support such systems and enhance global, national and local benefits derived through their dynamic conservation, sustainable management and enhanced viability. अब वापस जाओ क्वेश्चन पे. क्वेश्चन का ये पार्ट जो है बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज में सेट है. गूगल भी करोगे तो एफएओ की वेबसाइट पे भी यही दिखेगा. एनी न्यूज़पेपर if it is publishing something about it may use this line, of course objective बताएगा, and you have your own commonsensical understanding. So you can answer this question, right? I can tell you this because I don't study subjects for UPSC, है ना. Subjects have their own independent existence. आप UPSC के लिए पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपना एक फंक्शनल मेथड डेवलप करना पड़ेगा, और वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना. इसका मतलब ये है कि क्लास का आउटकम कभी कभी उस क्लास के बाद नहीं दिखेगा. इट वुड नॉट बी अपरेंट आफ्टर द क्लास, इट वुड ओनली बी अपरेंट आफ्टर यू हैव अप्लाइड दिस, राइट. सो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट सीम्स कॉम्प्लेक्स बाय लैंग्वेज, इट सीम्स समथिंग टेक्निकल विच इट इज नॉट, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट असेसिंग योर टेक्निकल स्किल्स, है ना. कोई टेक्नोलॉजी टेक्निकल सवाल नहीं पूछा. अवेयरनेस, ठीक है. करंट अफेयर्स के साथ फंडामेंटल भी होता है. फंडामेंटल्स में लुक लाइक दिस, व्हेन डिड इट स्टार्ट, है ना. दूसरा, वेरेवर देयर इज फंडामेंटल देयर इज आल्सो बेसिक्स, ठीक है. और बेसिक्स में भी यूपीएससी आपसे इसका मतलब नहीं पूछ रहा है ना. इट इज नॉट आस्किंग द मीनिंग ऑफ इट, इट इज सिंपली सेइंग these are the three statements, can you make a correct assessment of which one is the most appropriate, because UPSC never says correct or incorrect options. UPSC says, meaning it says, but it says the best possible option has to be exercised. समझ गए आप बात? नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि उसके बाद तो मुझे टीचिंग छोड़नी पड़ेगी या तो किसी और की तरह टीचर बनना पड़ेगा, तो वो मैं कर नहीं सकता, है ना. दिस इज माई स्टाइल, इफ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट डू सो, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इन सवालों के नहीं आने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा. डोंट वरी अबाउट इट. आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो उसके बहुत सारे कारण होंगे. IR वुड नॉट बी वन ऑफ देम, राइट. इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. सो 2022 में ये पूछा, ये तो बहुत पास का है. इस बारे में शायद आपने ध्यान दिया तैयारी शुरू करने से पहले, शायद, है ना, कि ये सवाल क्यों पूछा यूपीएससी ने, क्या आता है इसके अंदर, राइट. देखा पहले तो सवाल, पहला सवाल यही आता है, चेकलिस्ट बना लो. क्या क्या किया? क्या क्वेश्चन पेपर देखने की कोशिश की? क्या उसके आंसर को समझने की कोशिश की? क्या पैटर्न समझने की कोशिश की कि ये क्वेश्चन बेसिक था, करंट अफेयर्स था? वेरी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन. ऑल राइट. So the question is, first of all, try to answer this, right? You, with reference to the United Nations Credentials Committee, consider the following statements. In what context was this in news at all? 2021 से 22 के साइकिल में ये न्यूज में रहा होगा, तब यूपीएससी ने पूछा. किस कॉन्टेक्स्ट में? किस कॉन्टेक्स्ट में? वही कॉन्टेक्स्ट जिसके सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछे, जिनका जवाब आपको देना जरूरी नहीं है. अफगानिस्तान, है ना, तालिबान. उसी दौरान अखबारों में यह छप रहा था कि UN इज कंसिडरिंग द इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्रेडेंशियल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अफगानिस्तान, म्यांमार. ऑलराइट, म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ था, अफगानिस्तान में तालिबान हैड कैप्चर्ड पावर. तो जब ऐसा होता है तो हु रिप्रेजेंट्स, ये बेसिक है इसका. और जब उस साल हो रहा है तो अखबार उस साल जरूर छापते हैं, ठीक है. तो आपने देखा होगा न्यूज आर्टिकल में, लेकिन या तो आपके पास भान नहीं था, या ज्ञान नहीं था, जो भी नहीं था, या मन नहीं था. तीसरा सबसे कमजोर कारण है और सबसे प्रभावी कारण है, मन नहीं था. मेरा मन किया तो मैं किसी सब्जेक्ट को 15 घंटे पढ़ा, मेरा मन नहीं किया तो मैं किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, और फिर मैं प्रार्थना करते हुए चला गया एग्जाम में कि जो पढ़ा है वही आ जाए. सो अगर आपका मन ही सब ड्राइव कर रहा है तो ये अलग अलग भाषा में हर कोई कह रहा है. इस पे मैं यूट्यूब वालों से एग्री करता हूं कि अगर आपका मन आपको कंट्रोल कर रहा है तो यंग उम्र है, समझ लीजिए, होता है. लेकिन यूपीएससी एग्जाम में मन से बाहर भी जाना पड़ेगा, ठीक है. आंसर दे सकता है कोई? 3 ओनली ही है. सॉल्यूशन देखा था? ओके. 3 स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी के बारे में.
It's a committee set up by the UN Security Council and works under its supervision. सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में इतना छपता है एक कॉन्सेंसिकल बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन that if I am studying or if I have read consistently, at least I know the major committees of the UN Security Council. सुना तो होगा ही मैंने. एक डिटर्मिनेशन ही होता है. It traditionally meets in March, June and September every year. चलो कोई नहीं. I don't know about this. Okay, yeah, that is your determination. It assesses the credentials of all UN members before submitting a report to the General Assembly for approval. Common sensically ये लग रहा है कि क्रेडेंशियल तो करता ही होगा क्योंकि नाम में क्रेडेंशियल्स कमिटी है. और आपने देखा होगा जब प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेसिडेंट बन जाती हैं या कोई भी प्रेसिडेंट होते हैं तो ये रेगुलर फेनोमेनन है दैट फॉरेन एम्बेसडर्स मीनिंग सो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर सोवरेन्स वुड कम एंड प्रेजेंट देयर क्रेडेंशियल्स टू द सोवरेन ऑफ इंडिया. क्रेडेंशियल्स का मतलब तो डिक्शनरी में भी पता चल सकता है लेकिन मुझे एफर्ट नहीं लगाना. देखो ये यूट्यूब चैनल्स और ये ज्ञान देने वाले गुरु इसलिए चल रहे हैं इतना क्योंकि हर किसी को ज्ञान की प्यास है ना. सो योर अटेंशन इज अ प्रोडक्ट whether you are using it to your advantage or not, it's up to you, right? I'm not saying that you all of you do that, but this is something that generally we talk about, how what has happened to our attention. हमारा अटेंशन स्पैन को क्या हुआ. जब मुझे पिछले साल नींद आना बंद हो गई तो मुझे डॉक्टर ने भी कहा कि सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करते हो क्या, विच आई वॉज नॉट. तो ये हम चर्चा करते हैं इसलिए मैं ये बातें बोलता हूं. मैं ये नहीं कह रहा कि आप करते हैं, अगर आप करते होंगे तो ध्यान दीजिए. ऑल राइट. सो द करेक्ट आंसर जानने से पहले हम चले जाते हैं यहां करंट अफेयर्स. ठीक है. ये दिसंबर 2021 में दिख रहा होगा आपको. दिसंबर 2021 में हिंदू के अंदर एक आर्टिकल है. सितंबर में भी आर्टिकल आया था. नो कॉन्सेंसस ओवर एनवॉयज ऑफ अफगानिस्तान एंड म्यांमार. द कमिटी हैज डिसाइडेड टू डिफर इट डिसीजन ऑन द क्रेडेंशियल्स इन दीज टू सिचुएशंस. ठीक है. ये एक आर्टिकल दिखा रहा हूं मैं इसको. ऐसे और भी आर्टिकल हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि क्रेडेंशियल कमिटी क्या काम करती है. तो भाई when we had to study something that we didn't know, we first studied newspaper, familiarize ourselves with the terms. और हम यूनिवर्सिटी में तो भाग्यशाली थे कि हमारे साथ पढ़ने वाले लोग थे ज्यादा, तो हम उनसे पूछ लेते थे कि भाई व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, ऑल राइट, व्हाट इज रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का क्या इंप्लीकेशन होता है. तो हम ऐसे पढ़ते थे अपने एफर्ट से, है ना. हमने कभी नहीं माना कि ये सारे सब्जेक्ट्स हमको कोई बिठा के, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, अलग से पढ़ा दे. तो ऐसे मैंने सीखा, इसलिए मैं आपको खुद से सीखने के लिए ज्यादा बोलता हूं, राइट, बिकॉज आई कैन ओनली टीच यू व्हाट आई हैव डन, राइट. सो ये था, आपकी जिम्मेदारी थी पढ़ना. नहीं पढ़ा तो गलती नहीं है आपकी, फिर भी आपकी जिम्मेदारी है. ऑल राइट. नाउ इफ यू सी बेसिक्स रूल्स, इफ यू गो टू ओरिजिनल रूल्स तो आप कैसे मिल जाएंगे यूएन के रूल्स में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में. रूल 27, 28, 29 इस बारे में बात करता है. क्या बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो? कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है कभी? गुटका जिसको कहते हैं, मतलब कि बेयर टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द लैंग्वेज यू विल नॉट रीड इट. यू विल रीड सम बुक विच इज अ शॉर्टकट, देन यू विल कंप्लेन कि ये तो कवर नहीं करता सिलेबस. यू विल नॉट रीड अ कॉम्प्लेक्स बुक, बट पीपल यूज टू रीड डीडी बासु. इफ नॉट डीडी बासु, एटलीस्ट सुभाष कश्यप. इफ नॉट सुभाष कश्यप, देन एटलीस्ट वेरियस बुक्स आर देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो पढ़ने की आदत नहीं तो मुश्किल आएगी. अब ये है कॉम्प्लेक्स तरीका. द क्रेडेंशियल्स of the representatives and names of members of delegation shall be submitted to the secretary general if possible not less than 1 week before the opening of the session. UN का session सितंबर में होता है. The credentials shall be issued either by the head of the state of or government or by the minister for foreign affairs. ठीक है. क्रेडेंशियल नाम की कोई चीज होती है तो यूएन में जो जा रहा है उसके पास क्रेडेंशियल होना चाहिए. क्या कि भाई आप आधिकारिक रूप से ऑथराइज्ड हैं. Rule 28, a credentials committee shall be appointed at the beginning of each session. All right. It shall consist of 9 members who shall be appointed by the General Assembly on the proposal of the President of the General Assembly. The committee shall elect its own officers. It shall examine the credentials of representatives and report without delay. ठीक है. Any representative to whose admission a member has made objection shall be seated provisionally with the same rights as other representatives until the credentials committee has reported and General Assembly has given its decision. So ultimately
म्यांमार के अंदर कू था, तो करंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम भी बैठेंगे, नए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने भी अप्लाई किया, है ना। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं सोचते हो कि ऐसा भी होता होगा। ऑलराइट, जाओगे ज्वाइन करने अपनी सर्विस को तो डॉक्यूमेंट जमा करोगे ना, कोई डॉक्यूमेंट चेक भी करेगा, वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या है, तुम्हारा क्या है वो डॉक्यूमेंट, क्रेडेंशियल। ऑलराइट, तो ये है। और जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये अखबारों में छपता है ऐसा। A credentials committee is appointed at the beginning of each regular session of the General Assembly. It consists of 9 members who are appointed by the General Assembly on the proposal of the President. The committee reports to the Assembly on the credentials of representatives. तो बताओ, ये सब पढ़ रहे होगे तो क्या एक चीज कम से कम याद हो रहेगी तुमको, सोचो। इट विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग। पहले में सिक्योरिटी काउंसिल है, आपने क्लियरली देख लिया, जनरल असेंबली है। वॉज इट अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन? नहीं, है ना। यूपीएससी का क्वेश्चन इसलिए देखना चाहिए, अदरवाइज दुनिया तो आपको अपने ज्ञान के चक्कर में ना चाहिए। हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई एक्सपर्ट है। मैंने 1 साल तैयारी कर ली, मैं एक्सपर्ट हूं। मैंने 4 अखबार पढ़ लिए, मैं भी एक्सपर्ट हूं। मेरे पास पीएचडी है, मैं भी एक्सपर्ट हूं। आप भी एक्सपर्ट है, मैं भी एक्सपर्ट हूं, राइट। So that's why self-effort matters. No, even if easiest of the content is being produced by anyone. All right, don't fool yourself. Don't allow anyone to fool you. And I'm not saying that anyone is doing that. I'm simply saying that effort की कमी कई बार नजर आती है, right? ये भी आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये तीसरा पता है ना। तो आपका आंसर कैसे हो सकता है? ये गलत है, एलिमिनेट। 50% पहुंच गए आप। अब 2 की मुश्किल है आपकी, राइट? 2 की मुश्किल है। क्या बोला? सेशन की शुरुआत में फॉर्म होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मार्च, जून और सितंबर में मिले, है ना। दिसंबर में भी मीटिंग हो रही है। अखबार के किस डेट को आर्टिकल आए वही देख के भी ये इंफॉर्मेशन पक्का होगी आपकी। वैसे फंडामेंटल बताया है कि भाई जब भी सेशन शुरू होता है उसकी शुरुआत में ये कॉन्स्टिट्यूट होता है हर साल। इट्स नॉट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परमानेंट कमिटी ऑफ एनी सॉर्ट्स, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, राइट। इट हैड कम इन न्यूज एंड नाउ द आंसर इज A3 ओनली। कई लोगों का हाथ कांपेगा इसमें भी, 3 ओनली को लगाने में भी। कहीं ना कहीं तो ऑप्शन लगाना पड़ेगा ना। यू हैव टू पुट एन ऑप्शन। यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग द ओमार शीट होम एंड देन रिलैक्सिंग एंड देन मार्किंग एंड देन सबमिटिंग, कल जमा कर दूंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो जब डिटरमिन कर लोगे तब भी कॉन्फिडेंस की कमी होगी, एंड दिस कॉन्फिडेंस की कमी समटाइम्स हैम्पर्स अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, ऑलराइट, बिकॉज दे अल्टीमेटली आर नॉलेजेबल बट दे आर समवेयर थिंकिंग कि 60 सवाल एक्यूरेट, 70 सवाल एक्यूरेट। एक्यूरेसी नहीं आ पाती यूपीएससी में या यूपीएससी जैसे एग्जाम में। ये नीट नहीं है ना। अनसर्टेनिटी इसमें ज्यादा है कंटेंट के हिसाब से। कंटेंट मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत अलग अलग एरिया से, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द कॉम्पिटिशन इज इम्परफेक्ट। दैट्स व्हाई प्लीज नोटिस कि आपको ये काम करना है, राइट। तो ये मैंने आपको दिखाया। तो ये पहला तो आपको याद रखना है। जिनको ये याद रहेगा उनकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। क्यों? प्रिंटेड मटेरियल हैज इट, PT 365 आई विल बी डिस्कसिंग इट, करंट अफेयर्स आई डू डिस्कस दीज थिंग्स। ठीक, आज काफी टाइम हो गया, चलते हैं, आज के लिए विदा लेते हैं, ठीक है। और आप मेरे लेक्चर्स पे ध्यान देते रहिएगा। अगर करंट अफेयर्स या किसी भी करंट अफेयर्स के सोर्स को फॉलो करते रहिए। मेरा लेक्चर क्या ही जरूरी है, विजन का मटेरियल है ना, PD 365, मेन 365 है। ऐसे आप ध्यान देते रहिए। IR जितना पढ़ाना था वो हम काफी पहले पढ़ चुके हैं, है ना। जरूरत पड़ेगी तो जैसा मैंने कहा था 1 घंटे 1.5 घंटे की अगली क्लास लेके मैं U1 पढ़ा दूंगा आपको, पर समझदार लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो मे बी वी कैन ऐड 1 क्लास क्योंकि कुछ पेज भी तो भरवाने हैं कुछ लोगों के, ठीक है। बट आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या करना है, राइट। सो एज आई सेड 1.5 hours would be required in the next class when I will discuss this in the applied form when we talk about United Nations, ठीक है। Thank you very much.
बोलो। सवाल पूछा है कभी डिसीजन मेकिंग पे? फिर आपको जवाब मिल गया ना वहां से। दूसरा, अखबार पढ़ रहे होगे तो अखबार की इंफॉर्मेशन काफी है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये अज्ञानता में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ चाहिए होता है, लेकिन अगर आप मेथड समझ गए तो अखबार की इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इज हाउ आई लर्नड अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मेरे पास ये कोई सुपर ज्ञान तो था नहीं, ना मैं ये मानता था कि यूपीएससी का सिलेक्शन हुआ सुपर ज्ञान का, ना मैं ये मानता हूं जिनका सिलेक्शन हुआ उनके पास सुपर ज्ञान है। अब सीनियर सर्जन हैड सेड समथिंग टू मी जो मैं हमेशा याद रखता हूं, एग्जाम निकालना एक स्किल है। आप एग्जाम को समझो और एग्जाम के हिसाब से आप कंटेंट को नेविगेट करो। तो पहला तो ट्रस्ट करो, अखबार अगर लगातार पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं कि टाइम पास कर रहे हो, ठीक से पढ़ लिया तो रिपीटेटिव तरीके से अपने आप आ जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर मैंडेट कहते हैं एक सिलेबस में। स्ट्रक्चर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ना ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है। ये फॉर्मूला होता है ना किसी चीज को करने का। तो डिसीजन मेकिंग में सवाल अगर कोई आया हो तो आप मुझे दिखा दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा आपको पढ़ना है, लेकिन जवाब तो आपके पास है ना। सवाल क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल के मैं क्यों बोलता है देखो, क्यों बोलता हूं देखो, क्योंकि दूसरा जो तरीका वो डर का तरीका है कि ये आ गया तो, ये आ गया तो, ये तो हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ छूटेगा आपका। पर अगर वो आपका कॉमन सेंस डेवलप नहीं हुआ, एग्जाम सेंस डेवलप नहीं हुआ, तो आपको नुकसान होगा। ठीक है। सो व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, A, by repetition you will understand what things are important. B, explanations are themselves there in those articles. Right? ये अखबार पढ़ने से होता है। तो इसको टेस्ट कर लेना है ना, 2-3-4 आर्टिकल एक ही चीज के बारे में निकालो, एक ही एरिया के बारे में, एडिटोरियल और न्यूज कवरेज जो हुआ होगा उसका, और ओपिनियन कॉलम छपा होगा, ऐसा हुआ होगा। देखो इन तीनों को पढ़ के, न्यूज पहली बार आई, एडिटोरियल ऑर्गेनाइज्ड एनालिसिस, और opinion larger analysis. Now if you have read these three about something, just see whether you remain uninformed after that, right? देख लो, खुद से टेस्ट कर लो ना इसको। So that's why I always say कि have a functional understanding of the examination which would take time, and only after that start judging yourself. अपने को जज करना प्रीमेच्योरली शुरू मत करो। ठीक है। और अखबार पढ़ रहे हो, जैसा मैंने कहा, ये लिमिटेड तरीका ही काफी चीजें सिखा देता है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते, व्हाट आई से इज डोंट फोकस ऑन बिकमिंग एक्सपर्ट्स नाउ, you will become experts eventually after you have given sufficient amount of time. What you focus on is awareness, one, and two, functional understanding. Functional understanding का मतलब क्या होता है? देखो 3-4 स्ट्रीम के लोग होते हैं। ह्यूमैनिटीज वालों को लार्जर व्यू, वैल्यू, एथिकल इश्यूज को जल्दी समझने में आसानी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई थिंक। इंजीनियर्स are good at implementation, good at execution, उनकी वो क्वालिटी है। ऑल राइट, दे कैन एग्जीक्यूट थिंग्स, दे शुड आइडियली बी एबल टू एग्जीक्यूट थिंग्स। कॉमर्स वालों को नंबर्स और नंबर्स के बेसिस पे पैटर्न की समझ होनी चाहिए, ये आपके गुण हो सकते हैं ना। सो इफ यू कैन हार्नेस योर ओन क्वालिटीज, नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम राइटिंग दिस एग्जामिनेशन और डूइंग जस्टिस टू, बट देन लक, टाइम, एटसेट्रा दीज फैक्टर्स आर देयर, राइट? Okay, so that's the answer. Read the newspaper. I think it would be helpful. Thank you very much.